also. Now, Ministry of Human Rights has decided to extend the same model of proactive provision of care uh, apart or in addition to persons with disabilities also to the elderly. And related to this, they have established this Elderly Grievance Redressal Committee, which is stipulated to be established under Senior Citizen Act 2021. Uh, Dr. Rizwan Taj is the member representing Ministry of Health, and the third member of the committee is Dr. Asghar Zaidi, who was Vice Chancellor, Government College University. He is traveling abroad, so he would not be present with us today. The Grievance Redressal Committee is very keen to hold such discussions where the key problems could be discussed so that while we design the system for the grievance redressal, we better understand the nature of the demand, the so-called unmet protections or social protections of the persons with of the elderly. So in that context, you would all know that we had the first discussion on 5th September. That was a general discussion, very useful one. A lot of ideas have been collected in that. And today's discussion is the second and last of the series. Initially, we had thought of covering mental health and dementia in the 5th September discussion. But then we realized that this is in itself an independent and a very big topic, and actually has become a major driver of creating big burdens on the family for the care as well as financial stress. And as popularly called, the old age and visibility and disability both go together, and mental health, which is also called invisible disability, unfortunately is on the rise. So considering this, that it's extremely important that we understand the challenge of dementia and mental health care, their incidence, their socioeconomic causes, their current treatment practices. uh, we have organized today's discussion, and today, as we all know, is also the UN Day for older persons. So that also is an opportunity to create awareness on these issues, because on both the issues, on dementia and mental health, creating awareness is also very important. So I thank all the speakers and the participants, and I request you all to continue joining hands together to make a real difference. It is my pleasure to introduce the the speakers in one go, and incidentally, most of us know each other. Most of the participants know them too. We would start with Dr. Rizwan Taj Sahab, who is a very well-known psychiatrist in Islamabad, and luckily he is one of the rare experts who spares time for policy development. And when Ministry of Human Rights requested Ministry of Health to nominate a member for the Grievance Redressal Committee, so we were very happy to see that he was nominated for that. He has been active in upgrading the legislation for mental health also. So, Dr. Sahab, thank you very much for sparing time today also. Then we would have Dr. Shahzad Sahab with us, the Vice Chancellor of Health Services Academy, whom we have requested to talk about developing a holistic framework for the elderly care. Dr. Sahab is an extremely active personality. We have been lucky to have him as a very active member of our research and development group. He is a very senior development practitioner, and he spent a lot of time in social security institutions, which actually gave him a good handle on that aspect also of social protection. So, Dr. Thank you very much. And Dr. is a very generous person also, in the sense that when we needed human resource for digitizing the records of CRPD of the persons who've been issued
disability certificates. He sent a lot of students. You people would not believe that 20 students of HSA sat with us for many weeks to do this wonderful major work. Even now, we are working, our research and development group is working with Benazir Income Support Program to develop the suitable packages for persons with disabilities, and it is his student who is working with us here. Thank you very much, Dr. Shahzad. And then we have Dr. Nasir Javed, our colleague, former PS officer who made his name as CEO of Urban Unit. And then we were together as faculty in National School of Public Policy also. Incidentally, Dr. Nasir Javed is one of the rare officers who was trained as a psychiatrist. He has a fellowship in psychiatry, and then he joined the service. So he brings the experience of both the worlds. And after retirement, then he is very active in spreading the awareness on mental health problems. Dr. Nasir Javed, thank you very much. Dr. Sab would talk about the implementation issues. We do make policies, but when it comes to the governance effectiveness, there we have issues. So we would hear Dr. Nasir Javed out on that. And then we have my very old friend, Mr. Majid Bashir, who has been part of judiciary, but then left after 15 years of service to the people. And then he is a partner of ABS, Ahmed Bilal Sufi firm in Islamabad. But he also is somebody who has his heart at the right place, and he spends a lot of time on these social issues, particularly on the disability and elderly, and spends a lot of time on writing, on talking, on taking care of the legal aspects also. I requested Majid to talk about the legal side of the thing, because unfortunately, the rights violations of elderly is increasing in the country. As I said earlier, abandonment is becoming a major problem. Forcible dispossession of elders from property, unfortunately, is also on the rise. So there are a lot of gaps, legal legislative gaps, and Majid would talk about these gaps. Then we have a very young psychologist with us from UK of Pakistan origin. She has been teaching at BNU, Rabia Waqar. Rabia, thank you very much for being with us. I requested her to tell us earnestly about the practice aspects, because where we do talk about a gap in the provision of care services, in this case, psychotherapy, but at the same time, this is a field in which there are a lot of issues, lot of challenges when it comes to the practice standards and the quality of care and possible exploitation which may be there in the field of psychotherapy. And now, as we all know, that we have a lot of psychology departments opening up, and it's good news that we would have in the coming days many more psychotherapists in the field, but the field perhaps needs a little bit more regulation also. So Rabia would set the context, and I have requested two heads of departments of psychology of Air University, Dr. Samra Malik, and of Bahria University, Dr. Shazia, to give a little comment, special comment on Rabia's presentation. And we would also have a special comment from our SPRC board member and friend. He has been our board member, Dr. Shahzad Ali, a retired federal secretary, who was Secretary Statistics and Dean National School of Public Policy, to also make a special comment, particularly on the problems of elderly in the rural areas. So we have, mashallah, a wonderful lineup, but still we hope that each speaker would take the due time that one should take, but we still would have enough time for the question answer session. Dr. Rizwan Taj, it's over to you. Thank you. Thank you. Thank you, Safdar Saab, and I appreciate your very
very convincing efforts to keep everybody on board and getting the best people on board as well. And we are all a family, and we are all looking for something better for our society in Pakistan. And that is the challenge, and the challenge is quite big. So I've been specifically asked to speak about dementia and a host of issues associated with it. Now, now, the issue is that I've been practicing in Islamabad for more than 30 years. So I have seen the transition and change in the presentation of the population and the mental health issues associated with it. And at the same time, I've seen the increased longevity of the population with the improvement in cardiac services and everything else. So if maybe 5-10 years back, I would see two cases or 3 cases of dementia a month. Now it's gone down up to maybe 2-3 cases a day, or certainly much more than that. And with it, the associated problems and the change in the family system and the family support network is also there, as we try to copy the West, and we get involved or spend time in other activities which are away from the family. So these are the background issues that are there. And dementia is very much, in my opinion, is probably one of the most serious physical illnesses that one can have. And it means a complete change for him. Now, just for a second, think that you wake up one day and everything looks strange to you. You think you are in a strange room, strange furniture around you. And then you look at the mirror and you look at yourself and you think, oh, who's this stranger? And think of how scared you would be and how much worried you would be that what is happening and how all this has changed and everything has changed around you. So again, the secondary effects of psychiatry and psychological problems would always be there. But at the end of the day, dementia has everything. It has the physical problems associated with it. It has the psychiatric problems, and of course, the cognitive decline, which is the cornerstone presenting problem of dementia. So the key issue here is that the person, if the treatment is not, the person problem is not detected at an early stage, then there is not much you can do, because it reaches an irreversible stage. So the key issue is that you need to detect and support and guide and educate the family as early as possible, so that you can stop the progression of disease, which at this time is very much possible, but there is no cure. Now, about 15 years back, I was at the American Psychiatric Association meeting, and the government of United States had put 12 billion for achieving a breakthrough in dementia. But to date, that never happened. There was no breakthrough so far. And we have some new medication and things like that, but they're so terribly expensive that probably our population would never be able to afford it. So we have to look at other things. Now, I think if we focus on a lot on prevention, that is the cost-effective and most cost-effective approach that we can go on. So if you look at the curve there, so education, the less education you have, the more likely your brain is not developed, and you are more likely to have problem of dementia. Now, if you have hearing loss, again, that is addressable if you need a device. Again, that is also an associated factor. Traumatic brain injury, again, we have all the time. If you go to PIMS, there are people on motorcycles who have been not wearing a helmet, and they are having accidents. And again, motorcycles are one of the most dangerous vehicles on the road. And you have traumatic brain injury is terribly, terribly common. And then hypertension, every person that you meet, say above 55, 60, you don't need to ask him, he will have both hypertension and he will have diabetes. So that goes without saying. So hypertension is there. Fortunately, alcohol use is not as much as in the West. And but at the same time, if alcohol is there, its effect on our physical structure and body is more than people in the West.
Then we have the problem of obesity also. Our diet is very poor, our lifestyle is very poor, we don't exercise, our weight is way above the normal, our BMI is way above the normal, and we tend to eat oily, carb-rich food. And that is one of our problems, and we don't have a balanced diet at all, no matter what you say. You can go anywhere, and what you will be served with is not what a balanced diet is about. Then again, smoking is very much there, and we keep on seeing smoking coming up with the new forms of vaping and everything else. And again, it's a very major risk factor. Then we come to mental health disorders. So a person already having mental health issues such as anxiety, depression is also at risk of dementia. So if we combine all mental illnesses and dementia, the dementia at say 65 would be around 5 to 8%. And if we combine all, it comes to 20%. Now, the dementia tends to double every 5 years. So at 65, it will be double, and then again it will double in another 5 years. So the more you live longer, the more the chances that you will develop dementia. And then the problem of social isolation is there. Family structure is breaking down. The families, the extended family system is breaking down. The children are, यहाँ Islamabad में तो the affluent people have all sent their children abroad, and they live alone and live a social isolated life. And if they keep in touch with their loved ones and their friends, then they do very well, and they have less chances of developing dementia. I give you a very excellent example. आप क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे एक bridge room है, and you see all these people, gentlemen and former retired secretaries above the age of 70, 80, and their minds are still active. And bridge is an excellent form of exercise that can prevent dementia. So you see these people playing bridge, even though they cannot move properly. There are a couple of people who are helping them around. But and if you talk to them, they are cognitively excellent. Their mind is excellent, in an excellent state. And physical inactivity, we are very in our lifestyle, we are not very generous about physical activity. So again, that's a big problem. Even with the mild changes in your daily routine, you can still have a reasonable amount of physical activity, which would be acceptable and would help in prevention. And then we go on to air pollution. Again, Islamabad is, you see the cars and the rush, which was not there 10, 15 years back. So air pollution is there, and with that, point missing is the use of pesticides. So the fruits that you eat, the veggies that you eat, if you don't properly clean them, so the pesticides are very much linked to brain dysfunction and brain disease. And in that, the dementia also comes, and Parkinson's disease, another lethal disease, which is in the elderly, wo bhi usme aata hai. But again, with Parkinson, you also develop dementia as well. And then last but not least, our insulin sensitivity starts dropping off after 40, again, due to our very poor lifestyle and diet and everything else. So we have a very high chance of developing diabetes, and that is again a factor which is almost there. So in all, about 40% of are potentially modifiable factors, and 60% we don't know if they are or not. So even 40%, if you can help delay the disease or not let it come to the surface, you've done a good job. And these are all factors that can be changed, can be modified. And for that, we need to train and educate our families and our carers and everybody else. Then we have the issue of what happens and how financial, physical, emotional burden for the family. So the whole problem, because you don't have trained people and the government doesn't supply trained professionals for you to be taken care of. And this problem, when it is fully developed, it needs a full-time carer. And it has to be, at the end of the day, the family who has to take care of them. And that has its own problems. The carer has to give up his work and his livelihood, and he has to manage to adjust himself, and he can himself be undermined by emotional and other issues due to his stressful
stressful capacity to take care of a very serious patient. Support system and community resources are crucial, but may be limited. So generally, we need to increase funding and resources for dementia and mental health research. We need to expand to affordable, comprehensive, culture-sensitive, religious-sensitive healthcare services, which are tailor-made for our society, not for the West or anywhere else. So it should be a cost-effective package of treatment involving everything. The treatment of the physical effects, the cognitive effects, and the psychiatric effects, so that the cost-effective measures that you take are affordable to the majority of the chunk of the population, and they can benefit from it. And there should be policies for family and caregivers, such as respite care and caregiver training, which we don't have anything like that. And then the integrated model to coordinate medical, social, and community-based services. Abhi Shahzad sahab baat kar rahe the primary care system ki, again, a very crucial component of care in the elderly. And again, even if you look at Islamabad, we have not been able to fully implement with all the resources, the space, and everything else. We haven't been able to implement a very robust primary care system. Fortunately, PMDC में हमने वो subject बना दिया उसमें MBBS लेवल पे, और हमने उनको कहा है, कॉलेजेस को कहा है कि वो आउटरीच कम्युनिटी सर्विसेज डेवलप करें एंड प्राइमरी केयर सर्विसेज को डेवलप करें. Public awareness campaign, very crucial and important, because this is a complicated, multifactorial, multi-system disease, and people don't understand it, and they tend to think about it in terms of some kind of religious or other reason for the person to become like that. And again, you must need to educate the general population, so that the problem is detected very early and the implementation plan is provided very early. Innovative models for the age-friendly communities, personalized care coordination, intergenerational programs, telehealth, remote monitoring, nutrition and meal delivery services, home modification, and aging in place. I think we need, if we need to plan to work and benefit the elderly, we must tailor make it to the population, say, of average citizen of ICT who has this much income, who has this much support, and what can be done and what cannot be done. There's no point in talking about interventions which are not available and probably will not be available for a considerable period of time. The caregiver is the crucial support person in the system that we are looking for. I, as a doctor or a clinician, might see the patient once every month or once every 2 months, but the caregiver is there 24 hours. And it's a very stressful situation for him. And again, I see a lot of people who are very generous in the effort that they give to their elderly person, their parent figure or brother or sister, whoever it might be. So again, you must understand that the caregiver must be supported, and so that he can give the proper care to the dementia person, and he can give better care and he can benefit more. Again, you need to understand family in terms of dementia, it's twice more common in females as compared to males. So financial issues will also be there, because the female does not have a stable income system, so she would also be financially dependent on the caregivers or the family around them. So again, these are the gaps in the healthcare system, which access to information, diagnosis, qualification, healthcare services, access to healthcare, dementia-friendly healthcare, participation, healthcare structures. So generally what happens is it's very difficult to diagnose in the early phase, and only a very trained, robust clinician who has seen a lot of cases would be able to diagnose at a very early stage. So any change that happens in a person in terms of his behavior
or having any psychological symptoms, or having minor cognitive decline, you must think, and one must plan well ahead that he or she might in the future develop this kind of syndrome. So think of this, just look at this picture a little bit. So if 1/4 of your brain is gone, so just think what implications this would have on the person. And that is exactly what I was talking about, that the brain is gone and it's not going to come back. And so far, there is no treatment for the neurogeneration. And so we have to rely on what we have and what is available in your home country and in Pakistan and in Islamabad. So it's a good thing that most of the medications that are used are available here, and they are not that expensive, especially the ones which are made locally, because this has to be a treatment for the rest of the person's life. Now think about why the person comes to the doctor. And this is not because of his memory decline, because they all think it's just normal aging or whatever. And it won't be because of functionality, because or it might be a little bit about functionality, but he's not working, but he's unable to handle money, or he's unable to dress himself and has some problem. But the real reason is the behavior issues. So he can be agitated or apathetic, or he could be wandering, or he could be disinhibited, he could be irritable, or he could be aggressive. And these are the reasons why the patient is brought to the clinician. And most of it has to do with aggression or some kind of disinhibition, where he takes off clothes in front of an audience, or he does something which is completely out of social context. And that really scares the family and they bring him. Or his absolute sleep cycle changes and he becomes a big problem to manage. So this is what brings the person to the doctor. And by that time, the dementia is actually well established itself, and the memory decline is very much ahead of itself. So again, the same thing, if you detect cognitive decline at a very early age, just by looking at forgetting names, or just by psychiatric symptoms presenting for the first time after the age of 60, you must think about dementia, and you must think about a treatment plan so that you can benefit the person to the maximum. By the time it reaches the last stage of severe dementia, then the person is totally dependent on somebody else or the people around him. So he can't really function as a normal person, and he has to have support of every kind. And of course, from the initial phases also, we see a lot of people who come because they claim that the banker is saying he cannot, we have not seen him in a while. He is unable, his sign is not matching his previous, so his money can't be taken out from the National Savings Center or something like that. And then we issue a disability certificate, or we issue a guardianship certificate as well. So the person's finances and his property, everything has to be maintained and maintained safely, so he benefits from it rather than others. I think I just want you to see here that Japan, 3.9 million. So Japan has a big chunk of a population of over 8 million above the age of 100. And they have, and that is because of their lifestyle. They eat a lot of good, healthy, uncooked fish and other things. So that helps them live longer, and they maintain a very healthy lifestyle otherwise in terms of exercise, and they are not overweight and obese. And again, dementia is very much prevalent over there. And at the same time, just to share with you, probably Japan is the most common country where the suicide rate is also very high, because they become lonely, they become alone, their partner has died, and suicide rates are very high as well. So I think just keep that figure in mind as well. So here is some of the, again, the risk factors: obesity, smoking, diabetes, and that goes on to progresses on to dementia from the 60 onwards. So if you look at all these factors, actually you can put a stop to here. And this is where the money is best spent,
where you advise people about this and you do not let it cross the level of to the level of dementia. So here is where all the effort, in my opinion, all the effort should be here in terms of prevention and education of the population, so that this does not develop into this serious, irreversible phenomena at the moment. Ji, Dr. Sab, thank you very much. I mean, are there still some slides to go? Sorry? Ji, are there still some slides to go? I think I am fine. If you're okay with that, I'm fine. I'm fine. Yeah, we can If you come slide, back. I'm Yeah, fine. we can come back to you Okay. again, sir, and we would share this presentation with the participants. And also, as we discussed earlier, the presentations here would be grown into policy notes, and they would be published in the SPRC Old Age Wellbeing Report for 2024. But this is such a huge topic, Dr. Rizwan, and you have, mashallah, set an excellent stage for the discussions and presentation which is coming up. My only problem with your presentation was that you have been very mild in suggesting people to take better care of their health and better care of their elders. I think we should be much more candid in telling people that, hey, behave, take care of your health and food and your elderly better. But there is no gainsaying the fact. And thank you very much for taking time to talk about the prevention side also. If this is a very good piece of information that at least around 40% of the cases are potentially modifiable and could be helped. So that is excellent. At the same time, bringing in the intergenerational aspect is also very important. And we do not talk much about the rights of the caregivers, which are very important. So thank you very much for this wonderful scene setting, I would say, which would make Dr. Shahzad's task earlier. Dr. Shahzad, it's over to you now. जी डॉक्टर शहजाद आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए. Dr. Shahzad, are you with us? अलिशा डॉक्टर शहजाद हैं हमारे साथ कि नहीं हैं? Sir, I think he got disconnected. We'll try reaching out to him. Okay, so we can move on to Dr. Nasir Javed. Dr. Sahab, are you with us? Dr. Nasir, are you with us? Dr. Nasir may be expecting that his turn is coming late. Majid ji, are you there? Ji, I'm here, sir. With your permission, I can fill the gap. Ji, please. Dr. Rizwan is also Dr. Rizwan has actually brought in many aspects which do talk about the preventive side, but I think a good number of preventive measures must have some legal backing. For example, in terms of nutrition, in terms of food, in terms of other areas. Please go ahead. Ji Majid sir, please go ahead. Okay, thank you, Dr. Sahab. Thank you very much. At the very outset, I would like to tell that this is the first kind of a legislation in Pakistan on senior citizens. And the legislation's name is Senior Citizen Act 2021.
and that is the federal legislation, and the applicable area of this legislation is Islamabad. And I do hope that the other provinces had taken inspirations from this initiative by the federal government, and I do hope that the legislations are in pipeline in the different provinces. Basically, Senior Citizen Act is giving a protection to the senior citizen, that in terms of recognizing their rights and importance. Since this matter is pertaining to medical issues like dementia and other medical health cares, so I would just like to cover the important part of this legislation, this act. This act is a very, very productive, I will say, in terms of giving a lot of offenses. When I say offenses, I mean that the offenses names are not highlighted in this act, but they have given these offenses with the name of privileges and benefits to the senior citizen. So under this legal coverage, when we say that law is providing a lot of privileges to a senior citizen, it means that if you will violate these and you will create hurdle in that, or somebody will ignore it, or somebody will not accept it, it is tantamount to commit an offense under the Pakistani laws. So by virtue of introduction of this act, we have a council, as the act says. This council is for 12 members, the ministers, the secretaries, one representation from finance, from NGO, from Pakistan Bar Council, and many others. So this council has a right to appoint a grievance committee or a grievance redressal committee to look after the chapter, what you call it, 2, chapter 4, that is highlighting the privileges to the senior citizen. And these privileges are like you have to take care of medical cares, pension issues, retirement issues, and a lot of benefit discounts on the medical, medicines, medical care. This is the huge list, which is around 15 and 16 privileges, which this act is elaborating very precisely. Along with that, the act says that the government will create a fund to look after the senior citizen. This is another, I will say, a great move on the part of supporting the senior citizens in terms of policy making, in terms of doing some productive work. One very important point is that when law is providing privileges, I will not say perks, privileges and benefits, they are also giving a procedure to senior citizens that in case they are facing problems, they are facing disobedience, they are facing that if somebody, government, private entity, any organization is violating all these privileges, these benefits, they have a right to file a complaint before the grievance committee. The grievance committee is, have a mandate to look after the needs and the protective clauses of this act. Like as I said, that the senior citizen has a right to free entry in the museum for the sake of argument. If somebody denies that, then the senior citizen has a right to file a complaint against that organization or the administration or a person before the grievance committee. And the grievance committee has, being a lawyer, they have a power of a civil court
to adjudicate the matter in terms of a summary trial. Summary trial means they will serve a notice to that person who has violated the privileges and benefit of the senior citizen. They will invite them or him to appear before the committee, explain, file a written statement, or submit his version, whatever he has. In case, if the committee is of the view that any organization or a person or an entity has violated the privilege class sectors like Section 4, Section 11 to 14, then they can impose maximum fine of rupees 10 lakh. I think this is a great sign that how the legislation is so serious about it. And the second is the committee, the grievance committee has a power of civil court. When we say that the committee has a power of civil court, it means that they can call anybody by serving notices or summonses. Then they can call them for witnesses. They can call anybody for recording of evidence, for production of any document. They can call anybody for affidavits, we call it Byan Hanfi, and call any record from government or from any person if that record or that evidence is relevant with the complaint of the senior citizen. Then, in case they have proved that somebody, organization, or any government authority has violated the Section 12 or Section 14 to Section 14, any privilege mentioned by this Act, then they can impose a fine. And when I say 10 lakh rupee, it means the maximum committee can fine 10 lakh. But as per the seriousness of the offense, they can go for 1,000, 2,000, 15,000, whatever the situation they have. And the second thing, in case you have the committee has imposed a fine on you, you have a right of appeal before the council. And the council is the administrative authority under the Act. If the committee is not, committee is of the view that the grievance committee has, the council is of the view that the grievance committee has rightly imposed the fine and the offense has been, proved, then they can maintain the order of the grievance committee. After this, there is no such thing is mentioned that where you can go for appeal, the second appeal. But under the law, under the constitution, you can file a writ petition against the council under Article 199 of the Constitution. That is a remedy available under the Constitution if somebody has no remedy available in the law. So after this, if you have final verdict from the Supreme Court after High Court and the Supreme Court, then there is a unique thing that you can recover the fine or the amount from the personal property of the person who has committed the violations against a senior person. This is another, very strong remedy under the law. And if you allow me to tell you that what is my personal view on this Senior Citizen Act, I think it's a unique legislation for elderly people, because under Pakistani system, under social setup that we have, we don't have any supportive things for these people. And I think this is very unique and people are not aware of this fact, to be very honest. And I have few things in my mind. If Dr. Safdar Sohail will take it as a note, that there are few things which I personally feel that these things should be included in the legislation, and that is the support of the Constitution. This Senior Citizen Act 2012 is a
legal obligation on the part of Pakistan under Madrid International Plan of Action of Aging. The second is the UN Principles for Orderly Person. But I think the Constitution itself is giving a lot of guarantees to the citizen, like Section 35, which I just want to read and need your attention, because I think by the end of this session, we can propose certain legislation amendment in the Senior Citizen Act due to the benefit providing by the Constitution of Pakistan. Article 35 of the Constitution is, let me recite for you what that Article 35 is telling to us. Section 35, the state, that is Section 30, Article 35 of the Constitution, the state shall protect the marriage, the family, the mother, and the children. So senior citizens are not mentioned in that. I think this article can be amended by providing or adding these few words that the state shall protect the marriage, the family, the mother, and the children, especially the senior citizen of the country. I think this is a suitable clause to give constitutional protections to senior citizens. And along with that, we have few other articles which are supporting, the senior citizen. That is Article 25. This is about the protection and equal treatment of the citizen. So I think this act is a great support. And the only thing is that we have to give awareness. We should start a campaign, awareness campaign for the senior citizen, and we should have a liaison with the bar associations, with the pro bono lawyers. You may have a session with the legal free legal aid cell, which is available in all the bar associations, and I will propose series of lectures in different bar councils or at other judicial forum to give awareness that in case you have any sort of a case or you have any sort of a complaint, you should support the senior citizen. And another thing, and you can also involve Ministry of Law, because Ministry of Law is, you can say, a great financial supporter to the bar associations. You can hire a legal team in all the provinces to take care of the elderly people, and you can inform them in case you have any problem or you have any grievances against any institution, against any individual. You can, we are giving you a list of the lawyers. You can call them, you can go there, you can prepare your draft, you can draft your applications, and then we can support you. Sometime I think that when you have this sort of a grievance committee, sometime you simply just write your grievances, but if you have a lawyer with you, then the lawyer will give you a lot of other legal support by giving you relevant sections which a person has violated for your rights. So I think these are my few suggestions and my few proposal. If you will ask me, I can arrange all these things. I can propose amendment, a few amendments in the law, and can help you to arrange and organize seminars or workshops with the lawyers. And that is all from my side. Majid, thank you very much for this extremely useful guidance to the Grievance Redressal Committee. We actually have been facing problems, for example, in operationalizing the health-related provisions of the Grievance Redressal Committee in the Senior Citizen Act. Now, they have written that you can impose a fine up to 5 million in case of medical negligence. But how to operationalize that, how to make proper regulations,
That is extremely important, and I really appreciate your offer to help. We would definitely request you to help us talk to the Bar Council. And if your researchers, I know that ABS has its own research base, if you could help us get a sense of the cases, civil law suits in the courts about the rights violation of the elders, that would be a good help to the committee to prepare our system better, because we are about to launch a complaint system. So we should know that which are the complaints which would be more common. Situating Senior Citizen Act in within Constitution, I think this is extremely important, and we have been discussing internally about strengthening the law. So there again, your offer is very nice, and thank you very much for that. I'm really happy that we are talking about that. There is a question from the audience about possible tax exemption to seniors, but we would come back to that after we hear out the two remaining speakers during the question answer session. Dr. Nasir, are you with us? डॉक्टर आई एम वेरी मच विद यू सर, मैं बिल्कुल आपके साथ पहले भी था। जी डॉक्टर साहब, ऑलरेडी माजिद ने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज का जिक्र करना शुरू कर दिया है, तो विद योर एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द वर्ड्स प्लीज गो अहेड टू एनलाइटन ऑल ऑफ अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सर, ये प्रेजेंटेशन मैंने अपलोड करनी है और जी जी आपको वो बता देते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर लें। ओह दैट्स गुड। Sir, thank you first of all, thank you very much for giving me this opportunity, and I really appreciate this whole effort of bringing this very important topic. मेरा टॉपिक सिर्फ इतना है जी, हमने पॉलिसी भी बना ली, लॉ भी बना लिया, और लॉज भी आई बिलीव प्रोविंसेस में तो शायद 10-10 साल हो गए हैं बने हुए, और उसके बाद व्हाट एक्चुअली हैपेंस ऑन ग्राउंड इज अ डिफरेंट स्टोरी, एंड प्रोबेबली वी नीड टू डू सम वर्क ऑन दैट एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो Alishwa need to move the next slide. Excuse me, this presentation मैं नहीं share कर रहा जी। जी, we're trying. There's some glitch. Either allow me to share or move the next slide, please. Yes, maybe you can share because there's a glitch. The next हो नहीं रही यहाँ से। Okay, then you have to unload it and then I will upload, and you have to allow me to share. जी, you can share now. Okay, I'm trying now. Where is my slide? Just give me 30 seconds and I can share. Is it visible now? Yeah, it is. It is. Right, sir. Right, sir. So what I'm talking is beyond policy and act. What actually challenges of strategy and implementation. और मेरा उसमें point ये है कि जी very briefly, I'll be very brief. कि 4-5 important चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि probably हमें focus करने की जरूरत है मजीद data के ऊपर। We hardly have any data on what percentage dementia has. Dr. Taj has presented some very good figures. बट ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ और उसके ऊपर मैंने काफी सर्च करने की कोशिश की है, पाकिस्तान का डेटा क्वाइट डेफिशिएंट है। दूसरी चीज अवेयरनेस। यस, दोनों स्पीकर्स ने यही चीज कही और मेरा भी इसमें यही पॉइंट है। सरप्राइजिंगली मैंने तकरीबन 50 डिफरेंट लोगों से पंजाब में और इस्लामाबाद में पूछा है, दे वर ऑल 60+ बिकॉज आई एम आल्सो, कि जी आप में से कितनों ने सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लिया है। नन ऑफ देम न्यू कि ऐसी कोई चीज अवेलेबल होती है। मैंने गूगल पे भी काफी सर्च करने की कोशिश की है नेट पे, देयर इज नो अवेयरनेस
कि जी ये कहाँ से बनता है, कौन बनाता है, नादरा हेल्पलाइन कॉल करके देखिए, दे डोंट नो। वो कहते हैं जी हम इतनी हेल्प कर देते हैं कि आप आएंगे तो हम फौरन सर्व कर देंगे, इससे बियॉन्ड कोई चीज़ नहीं है। और मैं इसमें खैर दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि हमें सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत ही क्यों है? CNIC itself is a senior citizen card क्योंकि उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है. So anybody with that date of birth is basically a senior citizen card. Why actually we add a separate layer of bureaucracy and put people के जी ये डॉक्यूमेंट लेके आए, वो डॉक्यूमेंट लेके आए? I don't know what is that reason. तीसरी इसी में मेरा एक पॉइंट ये भी है कि we should not make citizens senior citizens at 60. Rather we should start registering them at 55. क्योंकि जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और एक्टिव उनको हमने अवेयरनेस लानी और करना है, दैट शुड बी नॉट वंस दे हैव क्रॉस्ड द 60, रादर उससे पहले होना चाहिए, ताकि 60 तक उन्होंने जो एक्सरसाइज करनी है, एफर्ट करनी है, फूड केयर करना है, अपने मेडिकल चेकअप कराना है, 60 प्लस के लिए तैयारी करनी है, वो पहले पीरियड पे कर लें. The fifth point that I want to make is that there is very little policy implementation mechanism, and when I say policy, it includes laws as well. जैसे कि मैंने पहले कहा कि पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान चारों में 10 साल हो गए इस लॉ को बने हुए. What actually we are getting is yes, बैंक में एक सेपरेट लाइन हमें मिल जाती है, नादरा पे फैसिलिटी मिल जाती है, रेलवे पे हमें जो है वो डिस्काउंट किसी हद तक मिल जाता है अगर हमारे पास वो सारे कागज और वो सारे पूरे हों. बट ओवरऑल आई बिलीव कि हमें what we need is a proper strategic action plan कि अगले 10 साल में हमने इस लॉ को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, और उस एक्शन प्लान के देन एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल और रिसोर्सेज भी जो है वो आई बिलीव के रखे जाएं. और इंटरनेशनल एग्जांपल्स में अभी स्लाइड मूव करनी है, मैं उसमें क्विकली गन थ्रू कर दूंगा. उसमें वी शुड लुक एट सम अदर एग्जांपल्स हाउ द कंट्रीज हैव मेड दैट. बट अवेयरनेस पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करना चाहूंगा, एंड दैट इज द लैंग्वेज बैरियर. हमारी सारी लेजिस्लेशन, हमारी सारी वेबसाइट्स, हमारी सारी पॉलिसीज 99% ऑफ ये जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज में है जिसको हमारी पॉपुलेशन का मोर देन 60% प्रोबेबली शायद समझने में बहुत मुश्किल पेश आए. हमारी वेबसाइट्स उर्दू में बिल्कुल नहीं है, सो वो पॉपुलेशन जो कि हमारी इंग्लिश नहीं समझती उसको तो हमने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया अवेयरनेस के लिए. सो लैंग्वेज आई बिलीव इज वन एरिया वेयर वी शुड फोकस कि जो भी हमने सेमिनार करना है, वर्कशॉप करनी है, पॉलिसी छापनी है, उसको ऐसी उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस में जरूर कर लेना चाहिए. ये पॉइंट हो चुका है कि प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट. डिमेंशिया, मेंटल इलनेस डॉक्टर साहब कवर कर चुके हैं. की फैक्टर्स ऑफ कोर्स जो हो चुके हैं कि वी रियली नीड टू फोकस ऑन लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन एंड अदर थिंग्स सो दैट ये डिमेंशिया की नौबत ही नहीं आनी चाहिए. दिस स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती और गवर्नमेंट जमा लेना भी नहीं चाहिए. इसको स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए. दैट स्ट्रेटेजिक प्लान शुड एक्चुअली फोकस कि जो NGOs हैं, कम्युनिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फैमिलीज हैं हमारी, वो इसको किस तरीके से जो है वो देखभाल कर सकती हैं. एंड ऑन अ सिमिलर नोट, हमारे तकरीबन 100 सैटेलाइट चैनल्स हैं, 24 घंटे 20 ड्रामे चल रहे होते हैं राउंड द क्लॉक. आज तक मैंने एक ड्रामा नहीं देखा कि जो इस किस्म के सीनियर सिटीजन्स के राइट्स पे या उनके इश्यूज के ऊपर ड्रामा बनाया गया हो. वाइल एज पर पेपरा एक्ट एंड एडवोकेट साहब मौजूद हैं, आई बिलीव के 5 to 10% ऑफ द सैटेलाइट टाइम जो लाइसेंस मिलता है, दैट हैज टू बी फॉर पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस. Where is that 10% of the time on the satellite television? We should focus and take accountability that as well. And yes, it should not be a stigma. Mental illnesses, as good or bad, are as prestigious as the blood pressure or the heart attack. Yes, दो एग्जांपल्स मैंने स्लाइड एंड डॉक्टर साहब ने कहा कि जी स्लाइड शेयर की जाएंगी. आई बिलीव वी शुड लुक एट जापान एंड द अदर दैट आई एम लुकिंग एट इज थाईलैंड. दे हैव सम वेरी गुड एक्शन प्लान्स. उनको प्रॉपर नाम दिए गए हैं, उनकी टाइमलाइंस हैं, उनकी जो है वो इंटरवेंशन मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एंड उसका रिजल्ट क्या आता है वो भी हमें पता होना चाहिए. और मैं इसी में वो चैट में क्वेश्चन भी लिखा है कि यस, ग्रीवेंसल, रेडरेसल कमिटीज एंड अदर्स, इट वुड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आज तक कितने लोगों को हम फाइन कर चुके हैं. एंड दैट इज वन टेस्ट ऑफ लुकिंग एट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी. And then one thing that probably we are missing is the daycare services. हम सिर्फ it's not just institutional care, but जैसे छोटे बच्चों का डे केयर होता है,
I believe we can have some daycare facilities for the elderly as well, where at least family के जो caregivers हैं वो दिन में अपनी रोजी रोटी कमा सके, and then they get some respite. और बड़ों जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको भी थोड़ा सा एक माहौल मिले कम्युनिटी का या उसका. And then similar is the Thailand. उन्होंने भी अपना डाटा भी बेहतरीन पड़ा हुआ, उनका नेशनल एल्डरली प्लान है 4 साल का, उनके मॉडल्स बने हुए हैं, प्रिविलेंस कैसे है उसकी, सपोर्ट कैसे है, उसमें नेशनल प्लान. फिर उन्होंने 18 से 23 का एक नेशनल प्लान बनाया, उसमें क्या क्या चीजें हैं. These are very relevant, I believe. वो rather than just looking at very local or too advanced, I believe जापान इसलिए केस स्टडी डॉक्टर साहब ने भी कह रहे थे, और थाईलैंड इसलिए कि relatively recently developed, so we can how they are looking after their elderly. And again conclusion जो है मेरा वही है कि जी we need data, prevention, why start at 60, implementation mechanism, strategies and action plans. Not everything can be done by the government. Partnerships are key. Senior citizen card, we shouldn't promise anything that we cannot deliver, and we need for a strategy and an action plan, and let's learn from the international examples. Thank you very much once again, Dr. Safdar, for giving me this opportunity, and especially this kind of seminars, जो कि आमतौर पर लोग इसको ज्यादा वो फैंसी पसंद नहीं करते या इन चीजों पे नहीं करते. Thank you. Hey, Dr. Thank you very much. God bless you, and bringing up extremely important issues. ये डिस्कशन हमारे यहाँ इंटरनली हो रही है कि सिटीजन कार्ड आपने लिख दिया लॉ में, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उसको आप अपना ये हो जाता है, लॉज बन जाते हैं. इसीलिए ये डिस्कशन होती हैं कि आप इनको फर्दर इम्प्रूव करें. ये जो आपने 55 वाला कहा, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आप देखिए कि हमारी हेल्थी, एक तो हमारी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एट बर्थ है 67, लेकिन हमारी हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो फार लेस है, अराउंड 57 है. दैट मीन्स कि जी हम जापान की बात कर रहे हैं कि जापान में जो डिजीज क्लस्टर हिट करता है एट द एज ऑफ 75, हमारे यहाँ तो वो 55 पे हिट करता है. और अगर आप देखें हमारे 50s में हमारे लोग जो हैं हार्ड लेबर तक नहीं कर सकते हैं. तो ये जो सो कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बाय इग्नोरिंग आर एल्डरली, हमने उसको उस एंड से बर्न करना शुरू किया हुआ है. और ये हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये एवरेज 56-57 है. इसको अगर सोशियो इकोनॉमिक डिसएग्रीगेशन करें और जेंडर का एलिमेंट लेके आए, तो हमारी फीमेल्स में हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 49 ईयर्स पे है, एंड ऑल द रेस्ट इज अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड डिजीज. तो अगर हम इसको 55 पे लेके आए और प्रिवेंशन पे तवज्जो करें, तो देन वी कैन टॉक अबाउट आवर एल्डरली population as a productive, still productive, largely segment of population. हम whereas generally जब हम बात बुजुर्गों की करते हैं तो as a dependent population उसकी जो बात करते हैं. Your point about daycare is extremely important. We actually were trying to have a presentation by an expert on that some other time. He couldn't be spared. He works at NEPA Lahore. He has gone on a study tour today. But we are stuck with this old home model where people usually are forced to join. There is a whole range of shelters, you can say. Shelter is a bad word. From daycare to hospice, including different forms of community engagement. So in that sense, that also is extremely important. So thanks again. We would like you to share the write-up of your presentation soon so that we can put it in our annual report. And these models, particularly Thailand, must be very, very important. Japan also. So please stay with us for possible questions. Rabia, are you with us? हाँ जी बिल्कुल, I'm there. Should I share the Ji, slide? yeah, please go ahead. Okay.
minute. Okay, are my slides visible and am I audible? Yeah, please go ahead. Yeah, thank you so very much. Good afternoon, everybody, and thank you so very much to Dr. Safdar for inviting me and making me share my opinion among such worthy speakers. I've been listening to Dr. Taj, Dr. Nasir, and I could actually gather a lot of points that might overlap with my presentation. But I think, this is the need of the hour that all of us get together and just like, the Resource Center is doing amazing work in terms of bringing everybody, all the professionals together in terms of improving the bringing improvement in terms of policy development and focusing on certain issues that have not been focused on in the past. So I will be specifically talking about addressing the challenge of poor psychotherapy practices in mental health for older adults. I will be touching a little bit in terms of other South Asian countries, but my presentation will solely focus on the case in Pakistan. So in Pakistan and other South Asian countries, older adults are particularly vulnerable, just like any other person, to mental health issues like dementia, depression, anxiety, psychosis. Psychosis, we see that as very rarely, just because we see an early onset of psychosis, and a late onset of psychosis in old age is not seen as very common. However, we see dementia-induced psychotic symptoms as being commonly in elderly as well. So this is something that also needs a bit of focus on. In terms of psychotherapy, well, it's an essential treatment, just like you would say the medical treatment that is provided by a psychiatrist in terms of providing the medicine. Psychotherapeutic treatment that is provided by another mental health professional, that is either a psychologist or a psychotherapist specifically trained in dementia or a specific disorder, is also an essential part of the treatment plan. And for many, it is very unfortunate to note that, in Pakistan, since we do not have any standards set for practice in terms of psychotherapy, there's a lot of variation, due to which it is very poorly practiced in the region. And it's not just the case in Pakistan specifically. You do see the poor practice as something in practiced in Bangladesh, in India, Sri Lanka. Yes, I would say that, they have started focusing on the community work and have really revamped the system in terms of psychotherapeutic treatment, but a lot of different countries are still suffering, including Pakistan. So the focus of my presentation will be to explore the gaps in psychotherapy for older adults, discuss the research findings, and propose policy solutions from a psychotherapeutic or psychotherapist perspective in terms of improving the mental health care for elderly. Just briefly looking at the landscape, collectively looking at how exactly the situation looks like in South Asia. So in terms of prevalence, over 200 million people in South Asia suffer from any sort of mental health issue, with depression and anxiety being the most common one. In Pakistan, however, you see 34% of the population, they show symptoms of depression or anxiety. And the report that I've taken this data from was published in 2021. However, I see the numbers rising significantly in 2024 because of the rising economic crisis. You will see less social support, you see a lot of isolation, a lot of and also a rise in growing elderly population as well. So the numbers have significantly increased, depression being the most common one. And also you would say that in terms of the rise of these mental illnesses, you see depression and dementia being the most common ones. However, anxiety, when we see that in terms of elderly population, sometimes it goes unnoticed, and you might in most of the cases you see anxiety आप उसको डाल देते हैं कि शायद probably ये उनकी aging का एक factor है. However, जो कुछ diagnosed cases भी इसी वजह से undiagnosed चले जाते हैं. Second important thing is the treatment gap. So हम बहुत सारा lack देखते हैं यहाँ पे भी in the South Asian countries. WHO की एक report के accordingly 90% of the people with mental health issues in low income countries, they go undiagnosed.
and they do not receive any treatment. अगर हम अपनी सिचुएशन के अंदर देखें तो अर्बन एरियाज के अंदर yes there is awareness, there are clinics available, but जब हम रूरल एरिया का यही एस्पेक्ट देखते हैं तो हम ना अवेयरनेस देखते हैं, बहुत कम अवेयरनेस देखते हैं, एंड उसके साथ साथ हम अनडायग्नोस्ड केसेस बहुत ज़्यादा देखते हैं। जिस तरह और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई रिमेंबर दैट अभी इनिशियली जब डॉक्टर सफदर ने स्टार्ट किया तो उन्होंने मेंशन किया कि मेंटल इलनेसेस जो हैं वो इनविजिबल इलनेसेस हैं। सो समथिंग दैट इज़ नॉट सीन ऑन द फोरफ्रंट, समथिंग दैट इज़ नॉट विजिबल फिजिकली, हम जनरली उसको उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से हम एक लैक ऑफ फंडिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू देखते हैं कि गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट अवेलेबल है। वी डू हैव प्राइवेट क्लिनिक्स, बट उसको सस्टेन करने के लिए अगेन देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। रूरल एरियाज के लोग उतनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर अर्बन एरियाज की जहाँ तक बात आती है तो वो इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं कि वहाँ पे विदाउट सपोर्ट बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। सो इन साउथ एशिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन मेंटल हेल्थ इज एक्सट्रीमली लो। और अगर पाकिस्तान का आप देखते हैं स्पेसिफिकली कि पाकिस्तान के अंदर कितना स्पेंड किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन 2020 it was 0.4% of its total health budget that was being spent on mental health, which again is very unfortunate and rather I think इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है कि अगर आप फंडिंग और सपोर्ट अवेलेबल नहीं रखेंगे टू अ कॉमन पर्सन, सो इट्स गोइंग टू मेक it a lot difficult for them to afford all these treatments, और फिर हम underdiagnosed cases और progressive mental illnesses बहुत ज़्यादा देखेंगे। Coming to lack of policy, now this is where the challenges actually stem from when it comes to psychotherapy. There is also a lack of national mental health policies, frameworks, standards of practice. जिसकी implementation नहीं होती। हमारा mental health ordinance जो 2001 जो mental health ordinance है उसकी कोई enforcement नहीं है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि अगर आप उस पूरे ऑर्डिनेंस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट का नाम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, उसका नाम बहुत रेयरली मेंशन्ड है। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, फ्रेमवर्क्स, दे ऑलवेज हेल्प द प्रैक्टिशनर्स एक्चुअली बी ऑन अलाइन करता है उन सारे प्रैक्टिशनर्स को टू बी ऑन वन पेज, एंड दैट इज वेयर स्क्रूटनी भी आपकी आसान हो जाती है, क्योंकि आप उसी को फॉलो करते हुए आप देखते हैं कि कहाँ पे मैल अडैप्टिव या मैल प्रैक्टिस हो रही है और उन केसेस को डील किया जा सकता है। तो हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन इस वजह से भी नजर आती है इन टर्म्स ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर हम लैक करते हैं। सो जिस तरह डॉक्टर नासिर ने बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि वी नीड डेटा, सो वी डू नीड डेटा इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज वेल। हमें डेटा की भी ज़रूरत है और उसकी इन्फोर्समेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट और उसकी इन्फोर्समेंट की भी ज़रूरत है। Moving on to how it looks like mental health and aging in Pakistan. So we do have a large number of population growing in terms of our elderly population. हमारी पाकिस्तान की जो population of people aged 6 and above is expected to reach 43 million by 2050. We're very glad कि ये सारे initiatives at the right time लिए जा रहे हैं, so that it is being taken as a preventive measure just to make lives easier for all these growing people by 2050. But then again, there are certain things that probably need more attention in terms of mental health and mental health policy development and framework developments. When it comes to dementia and depression, dementia is also rising, affecting over 1 million elderly Pakistanis, and also depression को भी आप consider किया जा सकते हैं। जो मुझे stats मिले थे, that was 34% of the people, जो कि 50 above को आप consider कर सकते हैं, who are falling under the category and are diagnosed cases of depression. Undiagnosed cases, मूड के सिम्टम्स जो होते हैं, जब तक हमारे यहाँ एक ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जब तक कोई चीज़ आपको फिजिकली अफेक्ट नहीं करना शुरू करती तब तक हम उसका ट्रीटमेंट सीख नहीं करते। जिस तरह डिमेंशिया की अगर बात करते हैं तो उसका राइज इस वजह से भी हम देखते हैं कि जब हम, जिस तरह डॉक्टर ताज ने कहा कि बहुत अर्ली सिम्टम्स कई दफ़ा हम नहीं डायग्नोज कर सकते, बहुत एक ट्रेन प्रोफेशनल उसको डायग्नोज कर सकता है। आई वुड इंटायरली अग्री टू दैट, लेकिन उन अर्ली सिम्टम्स को एजिंग के साथ रिलेट कर दिया जाता है कि नॉर्मल एक डिक्लाइन है, एक नॉर्मल कॉग्निटिव डिक्लाइन है, बिकॉज द पर्सन इज एजिंग। उसकी वजह से होता क्या है कि ये प्रोग्रेस करती है टू एन एक्सटेंट जहाँ पे दे नीड ट्रीटमेंट, दे नीड मेडिसिन। अगर हम इस चीज़ को एज अ प्रिवेंटिव मेजर अर्ली आइडेंटिफाई कर लें, जिस तरह मूड के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको कंसिडर किया जाता है कि अच्छा जी डे टू डे वेरिएशन है और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट सीक नहीं किया जाता। However, this is not the case in terms of health problems. When we see diabetes, cancer, उसको हम क्यों जाके कंसिडर करते हैं फॉर ट्रीटमेंट, जस्ट बिकॉज अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर होगा तो वी नो कि ये प्रोग्रेस करेगा टू द फोर्थ स्टेज एंड वी नो कि दिस कैन बी फेटल एंड लाइफ थ्रेटनिंग। However, यहाँ पे उन कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड में नहीं रखा जाता अनफॉर्चुनेटली।
So we do see rise in dementia, depression, anxiety. जैसे मैंने mention किया, उसके लिए हमारे पास proper stats available नहीं है, लेकिन anxiety is आप समझ सकते हैं कि ये side by side coincide करते हैं with all these mental health problems. And psychosis को हम उतना commonly नहीं देखते because उसकी late onset उतनी कॉमन नहीं देखते, बट डिमेंशिया के अंदर हम साइकोटिक सिम्टम्स को जरूर देखते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं विद द कॉग्निटिव डिक्लाइन एक फैमिली के लिए मैनेज करना। तीसरा इंपॉर्टेंट जो इशू है एजिंग के साथ रिलेटेड एंड ऑल्सो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इन पाकिस्तान, दैट इज अंडर डायग्नोसिस एंड द स्टिग्मा अटैच्ड टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो ज़्यादातर जो हमारे ओल्डर एडल्ट होते हैं विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, दे रिमेन अनडायग्नोज्ड एंड उसको कंसिडर किया जाता है, जैसे मैंने मेंशन किया कि डिमेंशिया को कंसिडर किया जाएगा या कॉग्निटिव डिक्लाइन को कंसिडर किया जाएगा एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, कि ये वो इस वजह से इनका मेमोरी डिक्लाइन आ रहा है। WHO जो है उसकी रिपोर्ट के अंदर इट हैज़ बीन मेंशन दैट मोर देन 90% ऑफ द पीपल विद डिमेंशिया, उनका फॉर्मल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट कोई नहीं होता। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू कि यू नो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट उसके साथ साथ प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है इन ऑर्डर टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। कुछ प्रोग्रेसिव इलनेसेस होती हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिनका कोई क्योर नहीं होता। डिमेंशिया आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि इसका भी प्रिवेंटिव एक प्लान हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, बट इसका क्योर नहीं होगा कि 100% क्योर कर जाए। बट उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम सिर्फ तभी बेहतर बना सकते हैं अगर हम उसको राइट टाइम के ऊपर डायग्नोज कर लेंगे। अगर तो हम उसके साथ अपने कल्चरल और उन बिलीव्स को अटैच कर देंगे और डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाएंगे, तो सफ़र सिर्फ और सिर्फ वो इंसान करेगा जो कि सफ़र करे, जो एंड उसके साथ साथ जो उनके फैमिली एंड केयर गिवर्स हैं। सो की चैलेंजेस एज अ साइकोथेरेपिस्ट या फिर साइकोथेरेपी के प्रैक्टिसेस के अंदर हम क्या देखते हैं फॉर ओल्डर एडल्ट्स कलेक्टिवली इन साउथ एशिया एंड पाकिस्तान। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. Dr. Safdar very rightly mentioned that we're going to see a lot of psychotherapists in the coming few days because there are a lot of institutions that are there. But क्या उन institutions में जो knowledge दी जा रही है, is that being regulated and monitored by a regulatory body? If not, then we're going to see the variation continuing. हम फिर उसी तरह से उस चीज़ को कंटिन्यू करते देखेंगे। क्या वो स्पेसिफिकली, जिस तरह यहाँ पे जब मैं देखती हूँ इन यूके, there are specific domains, there are specific pathways for let's say dementia, for disability, but do we also see those specializations in our higher education institutes? But ऐसी कोई governing body है जो कि इनके उस content को या क्या ये information जो provide करेंगे, जिस तरह की training provide करें, उसको monitor करती हो? So that is very very important. So lack of specialized training and specifically training and treatment that is provided for older adults, that is very very important. अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की बात करूँ तो 0.19% साइकाइट्रिस्ट per 100,000 people are the stats that I found for Pakistan, while WHO recommend ये करती है कि there should be at least one psychiatrist per 100,000 people. उससे उनका not just कि उनका अपना जो है burnout वो कम होगा, but it is also कि the quality treatment that we are providing to the people, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हम enhancement देखेंगे। और बहुत कम लोग, लाइक जो मैंने परसेंटेज देखी थी, आई डेंट फाइंड दैट ऑथेंटिक, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया विद रेफरेंस, लेकिन आई ओनली फाउंड लेस देन 10 पीपल हु वर एक्चुअली जेरियाट्रिक के अंदर जो ट्रेन थे इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी। और मैं क्यों इसके ऊपर एम्फोसाइज कर रही हूँ कि ओल्डर एडल्ट्स या इन स्पेसिफिक पाथवेज के अंदर ट्रेंड होना साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट का ज़रूरी है। द रीज़न वाई इज कि ऑल दीज ओल्डर पीपल दे रिक्वायर एडजस्टेड साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक्स। वन शू इज नॉट गोइंग टू फिट ऑल, वो आप उस एग्जाम्पल को यूज नहीं कर सकते। समटाइम्स हम जब अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स देखते हैं तो वो कंडीशन को एंड केयर गिवर्स के लिए उस सिचुएशन को बहुत होपलेस बना देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर स्पेसिफिकली trained in that particular problem and then उसके accordingly adjusted psychotherapies जो हैं वो provide की जा सके। Then important challenge that we as psychotherapists also face is the cultural and familial barriers. ज़्यादातर जो है for older adults the dependency is they rely in terms of their support, they rely on the family members, or in some of the cases like psychosis, वहाँ पे देखा जाता है कि शायद ये persuasion है और traditional healers के पास हम पहले जाते हैं rather than हम proper
प्रैक्टिशनर्स के पास जाएं। सो वो स्टिग्मा, वो अवेयरनेस, उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट उसके साथ साथ इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि जो ट्रेडिशनल, दिस इज़ अ मेडिकल, जस्ट लाइक other medical problems, just like other medical problems, this also needs attention and proper treatment should be provided. So research ये suggest करती है कि because हमारे regions के अंदर ये cultural और familial barriers जो हैं वो treatment seeking के behavior को बहुत हद तक affect करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि undiagnosed cases हैं और वो stigma अभी तक exist करता है. The third and the most important thing is the limited resources and policy gaps, जिसके बारे में मैंने initially भी बात की कि किस तरह से वो exist करता है in South Asian countries, पर पाकिस्तान में ये बहुत एक major problem है जिसको deal करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Specialized mental health institutions की बहुत कमी है for the elderly. मैं जब यहाँ पे उसको West के साथ हम compare करते हैं, अभी बहुत अच्छा डॉक्टर नासिर ने बहुत सारी different हमें examples दी, जापान से related, थाईलैंड से related. I would also like to mention कि यहाँ पे जिस तरह उन्होंने डे केयर की बात की, इस तरह यहाँ पे memory clinics available हैं. इवन आपको मॉल्स के अंदर भी डिमेंशिया के केयर आपको क्लिनिक्स नजर आते हैं कि जहाँ पे इफ द फैमिली इज देयर और वहाँ पे वो उनको इंगेज कर लेते हैं विद द ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज. सो आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि इस तरह की चीज़ें जो है हम भी इम्प्लीमेंट करें. इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं क्योंकि साइकोसिस और डिमेंशिया ये दो ऐसी डिजीजेज, देयर आर अदर्स एज वेल, बट ये दो ऐसी डिजीजेज हैं जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन भी इन सम केसेस रिक्वायर्ड होती है. फैमिली उसको नहीं उस तरह से डील कर सकती एट होम. सो उन केसेस के लिए हमारे पास क्या एडिक्वेट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इन पाकिस्तान इफ वी सी, तो हमें उस तरह से एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं नजर आती, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं नजर आती, टेली हेल्थ क्लिनिक्स नहीं नजर आते जो कि हमारे रूरल एरियाज को कवर कर सकें. So it is very important to see that. So limited resources is one of the important things जो कि एक challenge face करते हैं psychotherapy in terms of providing psychotherapeutic, adequate psychotherapeutic treatment to all the people, all the elderly people in Pakistan. फिर पाकिस्तान मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस, जस्ट लाइक आई मेंशन अबाउट 2001, कि वो भी अगेन इट इज नॉट वेरी इफेक्टिवली इन्फोर्स्ड, व्हिच अगेन लीव्स अ लॉट ऑफ गैप्स फॉर इंडिविजुअल्स. अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है इस सारी चीज का? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज कि वर्सनिंग का कॉग्निटिव डिक्लाइन. जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कैंसर की कि फर्स्ट स्टेज को आप इग्नोर करेंगे तो इट विल लीड टू द फोर्थ स्टेज. सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी भी प्रोग्रेसिव इन नेचर होती हैं. सो हम उस चीज को बढ़ते हुए जब देखते हैं तो हम उसका रिस्क बढ़ा देते हैं, नॉट जस्ट फॉर दैट इंडिविजुअल बट ऑल्सो रिस्क टुवर्ड्स अदर कॉन्सिक्वेंसेज दैट द फैमिली फेसेस. हाई सुसाइड risk हम देखते हैं in elderly who are undiagnosed with depression and anxiety. Increased caregiver burden, that is the most important one. बहुत अच्छी बात की थी डॉक्टर ताज ने कि we should have caregiver की education जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए. So it's not just the financial strain, it is also about कि अगर उनको केयर के बारे में नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि एविडेंस बेस्ड उनको मैनेज कैसे करना है, तो उन केसेस के अंदर we will see a lot of physical and emotional burnout as well. And last but not the least, that's the social isolation. So in terms of untreated anxiety, depression, हमारे family dynamics बहुत हद तक change हुए हैं. अभी जिस तरह से डॉक्टर ताज ने mention किया कि affluent जो लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो बाहर shift हो गए. So how about talking about them? If they're suffering through depression, anxiety, not getting the right sort of treatment, they will end up in terms of it would lead to further loneliness and make this situation a lot worse for them, rather than कि उनकी quality of life improve किया जाए in the old days. Some of the recommendations, so improvement in terms of training standards through accredited and licensing bodies. We need to have standards of practice. We need to have accreditation, regulatory हमारे पास bodies होनी चाहिए जो कि इन सारे programs को assess करें. दूसरा, incorporating evidence based treatments, ताकि इतनी सारी हमें वेरिएशन ना नजर आए in terms of psychotherapeutic treatment. Specific हमारे पास pathways हो, हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट हो जिसको हम प्रोवाइड करें और जो कि हेल्प करें हमारे प्रैक्टिशनर्स को भी. Addressing the stigma through public awareness campaigns and also in the focusing on the rural areas as well, I would say कि वहाँ पे भी उनको भी awareness होनी चाहिए about all these programs, all the things that are being implemented, because they also have the right, this is their human right, they should know कि अगर government कुछ implement कर रही है, they should also know about that, and also raising the awareness involving other non-profit organizations जिनको involve किया जा सकता है in terms of raising the awareness about mental health specifically, and also expanding access through technology through telehealth. So telehealth clinic is something that is very commonly practiced everywhere around the world. I think it's the need of the hour कि हम भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और इस चीज़ को इंक्लूड करें और अपने रूरल एरियाज को उसी के थ्रू जो है उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए.
That is it from my side. Thank you so very much for listening patiently. I'm just wrapping up everything, and thank you. That is excellent. We need young, dynamic leaders like you, Rabia. That's why I did not stop you in the tracks. You took good 20 minutes, but that is worth it because your presentation was very comprehensive and has thrown up many issues. And that actually is the situation that we have started to uncover bigger challenges, which is fine. We should not be overwhelmed by such discoveries that we spend only 0.4% of our health expenditure on mental health. We do not have standards of practice. Sri Lanka is much better organized on that. But I think your presentation gave many ideas to the participants as individuals also. I think the most important being this habit which must go, that when our older people start having early signs of mental health problems, we usually dismiss it कि जी उम्र ज़्यादा हो गई, it's okay, or in many cases perhaps हम थोड़ा सा उसमें paternalistic भी हो जाते हैं. Now we have a lot of issues which have been raised, but I requested a couple of experts to actually respond to the issues which would be raised. We have collected the questions in the chat box also. So we have with us Dr. Samra, who is head of the Department of Psychology Department, Air University, Dr. Shazia, who is head of the Department of Bahria University, and I'll come back to Dr. Rizwan about particularly Rabia's comment on the 2001 Mental Health Act. And then I'll get back to Dr. Nasir also about the financial burden which is coming up. And finally, I'll ask Majid about the tax aspect. A question was there that the senior citizens should have tax exemption. Unfortunately, Dr. Shahzad was disconnected, but he is back. His presentation is about holistic framework for elderly care for dementia and mental health. Dr. Shahzad, but what I propose is that now you take the role of concluding the session, and as your presentation is framed in such way, so let's have this brief discussion, and you would have the mic to conclude the session and present your holistic framework also. Dr. Samra, are you with us? Assalamu alaikum ji. I am with you ji. Ji, please go ahead. Thank you very much for being with us. We have promised to give 2 to 3 minutes to each special comment. Please go ahead. It's a pleasure, sir. I really appreciate what MOHR is doing, and that's a really need of time as well. So yes, I would just like to emphasize on certain areas where, yes, the formal diagnosis and the aging part really requires close attention. The biopsychosocial models for support is a need of time, because with age, neurocognitive declines, yes, we see the biological aspect, but alongside we require the psychological support, and a lot of social support is needed. For that, the family education support groups becomes one of the primary factors, because no formal diagnosis is generally given to the people who are experiencing such problems. क्योंकि हमारे कल्चर में हम समझते हैं लेबल है, टैबू है, and all the more बुजुर्गों की जो रेजिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके कोमॉर्बिड्स बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं. So we rarely come across people जिनको डिमेंशिया या कोई भी न्यूरोकॉग्निटिव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और साथ उनके कोई बेसिक हेल्थ इश्यूज नहीं चल रहे होते. सो उसमें बहुत सी रेजिस्टेंस आती है, एंड दे ऑफन कंप्लेन ऑफ कि तबीयत नहीं है ठीक. सो कोमॉर्बिड्स को एड्रेस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. And then lastly, the need for geriatric capacity in hospitals is something that's very important. We don't see our healthcare systems which are friendly for the oldies, particularly visiting the hospitals, visiting the malls. So yes, बाहर बहुत सा ऐसा काम हो रहा है, sleep
से related, memory से related, daycare centers, social service बहुत काम कर रही है. So maybe some policy on particularly for geriatric mental health care and the aging part will really play a vital role, and inshallah Pakistan would be there soon where we would be able to offer these services as well. Dr. Samra, thank you very much, but I'll hold you for a while. Please do comment on this lack of standard. You see, you are heading a department and you are producing psychology graduate, clinical psychology graduates. Is it true? This is this may be an alarmism also, but there are feelings that the psychotherapy practice in Pakistan leaves a lot to be desired. That's number one. And then in terms of awareness and in terms of coming up with innovative solutions, your university, your department as a body of faculty and students, what are you doing, or can you do more on that aspect? So for that, one, I would just correct. I am looking after the counseling centers at the Air University across campuses, with the Fazaya Medical College Counseling Center being the pivotal one. However, because I have been a part of the Air University Psychology Department as well, yes, there is a higher need of adding geriatric mental health, geriatric care to the course curriculum as well. Because generally, हम course curriculum में वो course नहीं पढ़ा रहे होते, और HEC लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे हमें वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराने हैं जिसमें स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलरली ओल्ड वंस के लिए प्रिपेयर किया जा सके स्टूडेंट्स को. Naturally, with reference to handling them, the way they speak, the way they are screened, the way they are treated has to be introduced. So all universities must include सर जिस तरह हमने चाइल्ड का अलग रखा हुआ होता है, एडल्ट का अलग रखा होता है, बिल्कुल इसी तरह. And I will make sure that we do introduce this in the upcoming WO with the approvals of the management as well. And so would recommend that all universities do consider this as one of the primary roles. Siमिलरली जब कोलैबोरेशंस पे इनके एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, ये इंटर्नशिप साइट्स पे जाते हैं, तो हम रिहैब्स में काम कराते हैं, हम न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर्स में कराते हैं, हम ऑटिज्म पे कराते हैं, हम एडल्ट्स के साथ कराते हैं, but generally people are not trained enough with handling of old care, right? So उस चीज को हम थोड़ा सा और एम्फसाइज भी कर सकते हैं, हम अपने इवेंट्स पे भी इसको थोड़ा सा टेकअप किया जा सकता है. जी, thank you very much, Dr. Samra. Dr. Shazia, are you with us? Yes, sir. Assalamu alaikum. Ji, please go ahead. Thank you very much for being here. Dr. Shazia, I may remind, is the head of the Department of Psychology at Bahria University. Please go ahead. Yes, okay. Assalamu alaikum, everyone. It's Dr. Shazia Yusuf, and I am head of department, Department of Professional Psychology, Bahria University, Islamabad, H11 campus. Thank you very much, Dr. Safdar, for inviting me in this. It's seriously a very important topic, and it need to be discussed. And as Dr. Safdar asked about that curriculum, so we are putting an effort into it so that we can have or inculcate this particular important segment into our curriculum. And we are training our students not only for the child cases, but also for the adolescents and also adult cases as well. But specifically when we talk about the old age, no doubt they are having a lots of issues with them, like they feel lonely, they have with the passage of time they develop depression, and sometimes they are feeling that they are not getting the quality time from their family members. They are being isolated by the family. Most of the time their psychological issues are underdiagnosed, and many times it is not being diagnosed by anyone. One of my students, she worked with the geriatric depression, and we have worked we have used the CBT with them. And although it's very difficult to make these people realize that what are their issues, because sometimes they are in the denial that they feel like their bodily symptoms are more stronger than their psychological one, but their psychological issues are also something which are aggravating the physiological symptoms. So both are going hand in hand, and they are along with
the psychological issues, they are having the physiological problems, and sometimes these psychological issues are leading to the physiological one, like they are having the high blood pressure, they are having the diabetes, and sometimes it is very difficult for them to carry out their activities, the daily life activities. So this thing need to be addressed, this thing need to be worked upon, so that we can help them out. And daycare centers or sorry, for the old age homes, अगर हम old age के लिए सिर्फ old age home बनाकर ये सोच लें कि हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो I think we are not at all playing our role. So we need to address this issue. We need to make our student to equipped or well equipped in order to deal or in order to help out these individuals who are a very important part of our society, and they have played their role. Now it's our duty to play our role. Thank you very much, sir. Dr. Shahzad, thank you very much for this quick but extremely relevant comment. It's a common cause. Really appreciate the efforts that you and Dr. Samra are doing in the academics. I think training the the students through the attachments is an effective way, and we hope that all your efforts would result in a considerable improvement of the situation of Dr. Shahzad, you want to say something? One thing I wanted to include in it, that we really need to educate the support system, as Dr. Rabia has mentioned, that it is very much important that we need to educate the people who are living with them, the caregivers of these individuals, because sometimes they are not realizing that they are giving a pain to the people, they are adding up to the misery of these old age people by giving a cold shoulder to them. So the education of caregivers is something which is very much important and which can play a very integral role in enhancing the mental health of the old age people. Ji, thank you very much. Now we have Dr. Nasir with us. Dr. Nasir, are you with us? Alishma, check kar lein. There is a question from the audience for Dr. Nasir, but we can go to Majid Sab. Majid Sab, ये point out किया गया कि taxation के हवाले से पहले शायद older people had some exemption in terms of taxation, which has perhaps been recently withdrawn. Is it the case, or is it even a good demand to have tax exemption for older people? Your thoughts on that, please. माजिद, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप. माजिद साहब, आप अनम्यूटेड नहीं हैं. माजिद साहब, आप अनम्यूट करें अपने आप को. You're not unmuted. I think we have not been able to communicate with Mr. Majid. He appears to have left his chair also. Dr. Nasir, are you with us? Otherwise, we go to Dr. Shahzad for his concluding presentation. जी माजिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आ रही, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है. आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया है? अच्छा, जी जी, वो मैं ये कह रहा था, ये आइडिया एक जमाने में फ्लोट किया गया था पार्लियामेंट में कि जो सिटीजन हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशन दी जाए जो जिनकी एज 60+ है. लेकिन मेरा ख्याल है जो इस वक्त इनकम टैक्स की रिफॉर्म्स आ रही हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से एक्सीड करेगी तो फिर आप पे टैक्स लगता है. तो ये भी वहां पे डिस्कशन हुई कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो तो जब 60+ हो जाते हैं या तो वो रिटायर हो जाते हैं, और अगर उनकी कोई इनकम जेन्युइनली जनरेट हो रही है और वो इस लेवल की है कि उस पर टैक्स लगे, तो वो कहते हैं फिर इस पर टैक्स लगना चाहिए. यानी जो ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर इनकम जनरेट करते हैं आप बहुत लैंडलॉर्ड हैं, आपकी बहुत सी जमीनें हैं, तो वो इस पे फिर डिबेट हुई थी कि फिर इस पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती. वो एक सर्टेन लेवल पे जैसे पेंशन है या कोई आपके और इंसेंटिव थे उस पे सोचा गया था. तो टैक्स का स्ट्रक्चर इस तरह का बना दिया गया कि मेरा ख्याल है जो एक नॉर्मल किस्म का
पाकिस्तानी सिटीजन है जिसकी एज 60+ है, वो शायद उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करेगा कि वो टैक्स दे। तो मेरा ख्याल ये प्रपोजल चल रही है। वो जो आपका क्वेश्चन है कि फ्लैट टैक्स एग्जेम्पशन, मेरा ख्याल है वो कहीं भी नहीं है, वो टैक्स हमेशा देना पड़ता है क्योंकि ये इनकम पे टैक्स है। तो बाकी स्कीम्स आप माजिद, अपना सेविंग्स पे टैक्स है क्या? किस पे जी? सेविंग्स नहीं, पे उस पे गवर्नमेंट ने आपको कंसेशन दी हुई है, टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, कंसेशन है बहुत ज्यादा। मुराद ये कि there may be many cases जिसमें के older people have their savings to take care of their needs in the old age, और वो उन्होंने रख दी सेविंग स्कीम में। Now there should be some stimulation कि जी एक एवरेज अगर एक बंदे ने इतनी देर अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी दी है और उसको इस तरह के डिमांड्स आने हैं, और इस हवाले से उनकी स्लैब्स को particularly in terms of saving that they have in different schemes should be, I think, a separate case, no? जी, मैं इसका जवाब देता हूं। ये कंसेशंस हैं, आपका मार्कअप ज्यादा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उन स्कीम्स पे ज्यादा है। आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि और भी बहुत सी स्कीम्स हैं जो बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, उस पर आप गवर्नमेंट से निगोशिएशन करके, FBR से निगोशिएशन करके, यू कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट। उसकी बेस के ऊपर आप ये जो पॉलिसी में आपकी जो कमेटीज हैं, कौंसिल जो है, इसका काम ही यही है कि ये सारा दिन वो एवेन्यू ढूंढेगी जिससे आपको बेनिफिट दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो आपके डिपॉजिट्स हैं, एल्डरली जो पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, उनके ऊपर काफी मार्जिन है कि आप उस पर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं, इसको टैक्स कभी एग्जेम्पशन ना मांगे, बल्कि आप कंसेशंस मांगे, मार्कअप इंक्रीज करवाएं, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कमाने का ज्यादा लें, वो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। तो स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा बनवाएं, टैक्स एग्जेम्पशन पे ना जाइएगा, बिकॉज टैक्स एग्जेम्प्ट हो नहीं सकता, वो इनकम टैक्स है, उस पे आपको पे करना। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि सेविंग स्कीम के अंदर और बहुत सी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसको ही इंक्रीज करा सकते हैं, और अपनी स्कीम्स को और एवेन्यू में लेके जा सकते हैं, गवर्नमेंट से और कंसेशन ले सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा मुफीद होगा, रादर जो एक स्टेट वे आप गवर्नमेंट से कहते हैं ना कि इनकम टैक्स फ्री कर दें, वो मुश्किल है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज वेरी प्रैक्टिकल सजेशंस के हिकमत के साथ उसमें वी वुड बी this was a question from Dr. Mustafa also and Mr. Atiq also. We would appreciate if some well-argued input is given to the Grievance Redressal Committee and particularly evidence from other countries. Dr. Nasir, आप हैं हमारे साथ? I think Dr. Nasir has left. We had this question from one of the participants about comparing Pakistan with Sri Lanka or Thailand, but we would do that comparison in our old age well-being report. Now, finally, I thank the guests who gave the special comments. Dr. Shahzad, it's over to you now. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sorry, the internet connectivity is unpredictable nowadays. So I got lost out and now it's restored again. Miss Alishma, अगर मेरी presentation लगा दें जी, thank you. आवाज क्लियर आ रही है सोहेल साहब? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, इसमें मैं उर्दू में ही इसको पूरी प्रेजेंटेशन, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप बेशक शेयर कर दें सारे पार्टिसिपेंट से जो भी मांगे। तो इसमें इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच वर ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय वेरियस जो हमारे एक्सपर्ट्स थे आज के। रिजवान ताज साहब ने बहुत सारी इसमें बातें कर दी हैं, जावेद साहब ने, और फिर मैं अभी सुन रहा था राबिया को। तो बहुत सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं दे आर मोस्टली डिस्कस्ड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक then the things tend to change a little bit. तो नेक्स्ट स्लाइड एक दफ़ा लगा दें तो मैं फिर इस पे बोलना शुरू करूँगा। आई विल नॉट गो थ्रू द होल प्रेजेंटेशन, मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं आज के जिस तरह से भी, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर सोहेल साहब? अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर अच्छा है हमारे लिए। हाँ, इसको कोई आर्टिकल में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, it is being recorded and live streamed. ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें ये देखें कि जब हम ये शुरू होने से पहले
मैं और सोहेल साहब और रिजवान ताज साहब यही डिस्कस कर रहे थे कि जो प्राइमरी केयर का कंसेप्ट है वो यूजुअली ये समझा जाता है कि वो माँ बच्चे की सेहत से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में एटलीस्ट ये कंसेप्ट है कि प्राइमरी केयर दो तरह का होता है। एक प्राइमरी केयर वो है जो MCH वगैरह होता है, और एक प्राइमरी केयर वो है जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज आम आदमी का। जबकि एल्डरली जो केयर है ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है केयर फॉर एल्डरली एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी केयर सर्विसेज इन द वर्ल्ड। अमेरिका में भी, यूरोप में भी, और अभी आपके साथ बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो कंसल्टेंट्स हैं साइकोलॉजी के, साइकेट्री के, उन्होंने भी जिक्र किया। सो डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर प्राइमरी केयर का जो बहुत बड़ा लोड है ना, वो एल्डरली की फॉर्म में आता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आपको पता है जिस तरह टोटल फर्टिलिटी रेट कम है बहुत, और डेसिमल्स में और पॉइंट फिगर्स में आता है, और वो यूजुअली उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव है मेजॉरिटी केसेस में। तो एल्डरली स्पीड से बढ़ रहे हैं और बच्चे उस तरह से नहीं आ रहे। तो हमारे यहाँ ऑपोजिट है, हमारे यहाँ विजिबिलिटी हेल्थ सिस्टम के अंदर बच्चों की बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा होलिस्टिक फ्रेमवर्क का, वो ये हमें समझने की ज़रूरत है, होलिस्टिक वर्ड को समझने की ज़रूरत है कि जब आप बात करते हैं ना होलिस्टिक की, वी मीन्स इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम अलहदा से सर्विसेज इस्टेब्लिश करना शुरू कर दें किसी खास तबके के लिए, लाइक बच्चों के लिए या किसी बीमार के लिए। लाइक हमारा जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, हेल्थ सिस्टम, बदकिस्मती मैं कहूँगा वो डिजीज बेस्ड मॉडल है। हमने हर बीमारी का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। So what we have in the country is it is a disease-based biomedical model. बायोमेडिकल से मेरी मुराद है ये क्यूरेटिव मॉडल है, क्यूरेटिव मॉडल बेस्ड ऑन डिजीजेस इन द कंट्री। सो व्हाट डू वी हैव a program for malaria, another program for dengue, another program for TB, HIV AIDS, फिर हेपेटाइटिस B और C, और फिर पोलियो, और फिर इसी तरह करते करते मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम, और काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है वो डिजीज़ की बेसिस पे चलते हैं। जब आप बात करते हैं ना होलिस्टिक की, तो होलिस्टिक में इंटीग्रेशन की बात होती है, डिसइंटीग्रेशन और वर्टिकलाइजेशन की बात नहीं होती। तो जो पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे हमने इस एक्ट के अंदर भी और आगे जो हम बात करेंगे भी एल्डरली केयर की, उसमें जो पहली बात करेंगे वो ये करेंगे कि हाँ, वी विल नेवर रिकमेंड एन एक्सक्लूसिव सेपरेट डिजीज केयर और वर्टिकल प्रोग्राम फॉर जेरियाट्रिक्स, जो कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में सजेस्ट भी किया हुआ है। लेकिन इस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में पाकिस्तान के विद 6% ऑफ द पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, अभी आपने बताया भी रिजवान साहब ने कि 80 से 90 लाख के दरमियान पाकिस्तानी जो हैं वो 60 ईयर से ज़्यादा एज के हैं, और 65 से ऊपर जाएंगे तो वो मजीद कम हो जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे। तो उसके लिए अलहदा से एक प्रोग्राम बनाना ना तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और ना ही वो जिस तरह बाकी डिजीज़ का हाल है ना कि मलेरिया, TB, HIV और हेपेटाइटिस B, C रैम्पेंटली प्रेवलेंट होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, उसकी अप्रोच अगर होलिस्टिक फ्रेमवर्क नहीं होगा उसका, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो पहली जो मेरी गुजारिश है, होलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि हम इंटीग्रेशन की बात करें विद इन दी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ हेल्थ, और एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई मसले हैं ना तो सिस्टम इंप्रूवमेंट की बात करें, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात करें फॉर एल्डरली। So what do we need is the current health system should have a window or a one window for the elderly care, not another room or another officer sitting in the same hospital only taking care for the elderly. It will create more problems than solutions. So पहली बात तो ये है कि होलिस्टिक और इंटीग्रेशन की बात करें। 4 कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि उस फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो करंट हेल्थ सिस्टम के अंदर हमें देने हैं, और मेरा मुराद हेल्थ सिस्टम से दोनों है, हेल्थ सेक्टर और नॉन हेल्थ सेक्टर दोनों। अब हम बात करते हैं रोड सेफ्टी की, या डोमेस्टिक वायलेंस की, या किसी भी तरह से जेंडर की, या हम बात करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ की जिसमें मल्टी सेक्टोरल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो उसमें 2 कंपोनेंट आते हैं, एक हेल्थ डिपार्टमेंट आता है और एक दूसरे डिपार्टमेंट्स आते हैं। एल्डरली केयर के अंदर भी हेल्थ सिस्टम के वो कंपोनेंट्स आएंगे जिसके अंदर बहुत सारे, और उसकी वजह आप सब ये बात मानते हैं कि एल्डरली को हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। वेस्ट में तो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, हमारे यहाँ थोड़े से मार्जिनलाइज्ड है और ज्यादा होते जा रहे हैं। दिन ब दिन एल्डरली की प्रॉब्लम में इजाफा हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर सिक्लूजन, एक्सक्लूजन, डेप्रीवेशन एंड मार्जिनलाइजेशन बाय देयर फैमिलीज। पहले ऐसा नहीं था। मेरे और सब सोहेल सफदर साहब के बचपन में हमारी एक बहुत जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी। तो जो बुजुर्ग थे दे वर ऑल बिजी,
अभी जो सिमरा ने बात की लोनलीनेस की, इट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम से 30 years ago और 40 years ago। ये अभी पिछले 3 decades में ये प्रॉब्लम बड़ा है, जब हमारी छोटी छोटी न्यूक्लियस फैमिलीज बन गई हैं और सॉरी ये जो हमारी जॉइंट फैमिली से हट के हम दूसरी फैमिली में आ गए हैं, जहाँ बच्चे अलहदा होना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे हमने घरों में अपनी अपनी एक फैमिली अलहदा बना ली है, तो उसकी वजह से एल्डरली के ऊपर फर्क पड़ा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वो रहती है जॉइंट फैमिली में, या कम से कम आसपास रहते हैं। तो जो हमारा जो एक एल्डरली केयर का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि सबसे ज़्यादा हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि इंटीग्रेटेड मॉडल हो, होलिस्टिक हो, और सबसे ज़्यादा कि उनको जो है ना ऐसे सिस्टम में हम लेके चलें कि जो उनको खुद ना ज़्यादा धक्के खाने पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े। हमने अभी इससे पहले डिसेबिलिटी में काम किया, मैंने और सोहेल सफदर साहब ने, उसके अंदर भी हमने ये देखा कि डिसेबल्ड को पिलर टू पोस्ट रन करना पड़ता है इवन फॉर द रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर बहुत कामयाबी SPRC ने ली और बहुत अच्छा काम किया, और काफ़ी चीज़ें उसके अंदर हमारी हैं जो कुछ दिनों में हम दिखा सकते हैं। ये जो होलिस्टिक फ्रेमवर्क है, इसके 4 कंपोनेंट्स जो बने हैं, एक है फिजिकल, ऑफ कोर्स उसकी जो एक हेल्थ है उसका एक कंपोनेंट फिजिकल एस्पेक्ट है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक सोशल एस्पेक्ट है, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वेल बीइंग है जिसको वेलनेस कहते हैं, और इसको माइंड माइंड बीइंग जो है उसके साथ भी इसको जोड़ा जाता है। और इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है रिलीजियस और बाकी चीज़ों के साथ भी है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। तो जो हमारा कंपोनेंट है, अब मैं कहूँगा ऋषिका से कि ज़रा एक दफ़ा फिजिकल दिखा दें। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कर दें। तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे जो डिजीज मॉडल है पाकिस्तान का, उसमें वेरी अर्ली ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक डिजीज आ रहा है। क्रॉनिक डिजीज का जो डेफिनेशन थी वो थी बुढ़ापे की बीमारियां, यानी कि 65 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगने वाली बीमारियां, जिसमें आया करता था डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, और मैनी केसेस आर्थराइटिस, और कुछ केसेस में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये 5-6 चीजें, और कैंसर, ये 5-6 चीजें थी जो आया करती थी हमारे क्रॉनिक डिजीज मॉडल में। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमने जो हमारा अर्ली ऑनसेट हुआ ना, जब डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स का, और आर्थराइटिस का भी, और COPD का भी, और इसके अलावा जो डायबिटीज है ये तो बहुत ज्यादा स्प्रेड भी कर गई और यंग एज में आ गई। 40 के बाद होती थी, 45 के बाद होती थी, तो वो अब 30s में आना शुरू हो गई। इसी तरह हाइपरटेंशन भी अर्ली हो गई है। तो हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब हमारे पास एक यंग लॉट जो है वो वाली बीमारियां लेके आ रही है जो एल्डरली में होती थी। तो इसका नुकसान किसको हुआ? वो एल्डरली को हुआ। वी वर ट्रेन्ड टू मैनेज द एल्डरली फॉर दीज डिजीजेज आफ्टर द एज ऑफ 60 मोस्टली। और दुनिया में वैसे डेफिनेशन जो है एल्डरली की वो 65 ईयर एंड अबव है। ओल्ड एज में जो है वो 65 से आगे लेते हैं। हमने काफी सारे टारगेट्स WHO में हम बैठे थे, तो जनेवा हेडक्वार्टर में वहाँ डिस्कशंस हो रही थी। तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मैं भी उनमें था, जिसमें हमने उनको कहा कि कुछ ऐसी इंटरवेंशंस बनाएं जो 60 से आप शुरू करें, 65 प्लस के लिए ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में अर्ली ऑनसेट है क्रॉनिक डिजीज का, और यूजुअली 60 पे रिटायरमेंट एज है, तो 60 के बाद ही हम एल्डरली के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये अभी भी 65 प्लस के लिए ग्लोबल पॉलिसीज हैं एल्डरली की, जो 65 प्लस ईयर के लोगों के लिए होती हैं। तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो आउट हो जाते हैं उससे फिर। तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू जो है वो है एक्सेस टू मेडिसिन का। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल हेल्थ, we need to develop a system of access to checkup, access to medicine, and of course access to proper food and nutrition. तो ये एक फिजिकल कंपोनेंट है जिसके अंदर हेल्थ सिस्टम के अंदर ही आप, और ये कहाँ पे होगा? ये तीनों हो सकते हैं प्राइमरी केयर लेवल पे। तो इसका इसका हमें किस तरह से हम ये कर सकते हैं? आप में से तकरीबन सब ने इस बात पे एग्री किया कि जो हमारी हेल्थ वर्कफोर्स है, हमारे जो सोशल वॉलंटियर्स हैं, सोशल वर्क है जो करते हैं वो लोग भी, और जितने भी इदारे हैं सिविल सोसाइटी के, इन सब को एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर ही इनको ट्रेन करने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड द assessment of the various issues faced by the elderly, and of course the medication management, chronic disease management, and food and nutrition for the elderly. तो ये एक फिजिकल हेल्थ के कंपोनेंट के अंदर
it will be very essential for us to not only understand the demographic and the disease burden in the elderly above 60 and 65, and then मेडिकेशन बहुत ज़्यादा इनको इनके प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ये 40s में अगर डेवलप कर लेंगे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, तो ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ पहुंचेंगे जब ये 60 प्लस क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट करें अलिशा। हाँ, साइकोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ लोनलीनेस का। यस, इट इज़ बिकमिंग वेरी सीरियस इशू। बहुत सारा इसके अंदर मसला आया। इसके अलावा आपने देखा कि इसकी जो डिमेंशिया, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, तो डिमेंशिया एंड मेंटल हेल्थ ये दोनों बहुत बड़े प्रॉब्लम बन जाते हैं व्हेन वी एज। हमारी एजिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, और उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को अडल्ट लाइफ में। तो अगर हमने एल्डरली केयर के ऊपर काम करना है, तो एक बात याद रखें कि इंटीग्रेशन होलिस्टिक फ्रेमवर्क ये होगा कि हम पहले से प्लान करना शुरू कर दें। से 40 ईयर्स ऑनवर्ड या 50 ईयर ऑनवर्ड प्लान करना शुरू करें बुढ़ापा। फाइनेंशियल तो करते हैं, सोचते हैं कि 50 साल के बाद या 55 साल के बाद लोग सोचना शुरू कर देते हैं पोस्ट रिटायरमेंट चीज़ें, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये पिछले दिनों मैं चाइना में था, तो आई सॉ अ लॉट ऑफ ओल्ड एज पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स। और वो मुझे फिर वहां मैंने पूछा उनके लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं ना, उनको हम फ्री नहीं बैठने देते, तो उनको वॉलंटरी भी और कुछ बहुत लो कॉस्ट पे उनको छोटे छोटे जो वजनी काम नहीं होता इतना ज्यादा, सो जो पुअर हैं उनको सफाई का काम दे देते होते हैं। वो एक टाइम से आते हैं और वो सफाई वगैरह करके चले जाते हैं। जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जरा से इनकम वाले हैं, जो थोड़े बेहतर हालात में, उनको चाइल्ड सपोर्ट और इस तरह के वॉलंटरी काम वो दे देते हैं, और उनको कुछ पर डीएम टाइप पर डे के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से देते हैं। और जो थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको वेरियस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में या जो हमारे एल्डरली होम्स हैं वहां पे उनको यूज करते हैं। तो सोहेल साहब, हमें अपने बुजुर्गों को ना बिजी करना है depending upon their capacities, so their education level, their income level, their sort of status of health, इन तीन चीजों को देखते हुए और जेंडर को भी देखते हुए, चार चीजें, जेंडर हो गई, उनकी इनकम लेवल हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया और हेल्थ लेवल हो गया, इन चार चीजों को देखते हुए हमने उनकी लोनलीनेस को मैनेज करने के लिए, अगर हम बुढ़ापे में अपने जो बुजुर्ग हैं इनको बिजी कर दें और ऐसी एक्टिविटीज में बिजी कर दें जो उनको पसंद है या उनको पसंद आए, तो मेरा ख्याल है कि जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी हेल्थ भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि डेप्रीवेशन, सिक्लूजन, एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन की वजह से वो इतना ज्यादा वो करते हैं ना, फील करते हैं चीजों को कि उनको मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जिस तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यहाँ पे लिखी हैं, सीबीटी लिखी है, ये ठीक है बातों से, और कॉग्निटिव सिमुलेशन थेरेपी और कई केसेस में तो मेडिसिन चाहिए ना हमें यहाँ पे। इट विल नॉट बी जस्ट द सीबीटी के जिससे मैनेज होगा, सीबीटी प्लस मेडिकेशन मॉडल चाहिए होगा कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए एल्डरली के। लेकिन कीपिंग देम बिजी इन हेल्दी एक्टिविटीज इज द हॉलमार्क। और ये अगर हम अभी से प्लान करेंगे तो शायद हमारा जो बुढ़ापा आने वाले लोग होंगे ना, वो पहले से प्रिपेयर्ड होंगे कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मेरे राय में जो मैंने दुनिया के मॉडल्स देखे हैं उसमें चाइना का मुझे मॉडल बड़ा पसंद आया, सिंगापुर का भी ऐसे ही है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी। लेकिन वहाँ पे क्योंकि सोशल सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है और उनके जो सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन और सोशल प्रोटेक्शन के मॉडल्स बहुत स्ट्रांग है ना, तो उस वजह से बहुत सारे लोग खुद ही ऑप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद वो लोग घर में रहना पसंद करेंगे और घर में रह के कंट्रीब्यूट करने के लिए भी राजी हो जाएंगे। सो बहुत सारा वॉलंटरी प्रो बोनो काम आप ले सकते हैं हमारे बुजुर्गों से, जो इल्म का खजाना होते हैं, एक्सपीरियंस का खजाना होते हैं, उनसे उनको किसी ना किसी तरीके से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट करें सोशल सपोर्ट में। ये जो एंगेजमेंट की मैंने पहले बात कर ली, पीयर सपोर्ट की और एल्डरली केयर सेंटर की, ये दुनिया में के मॉडल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में अगर उनको घर में रहते हुए किसी तरह से इसमें मेंटल एक्सर्शन भी हो, थोड़ी सी फिजिकल एक्सर्शन हो, तो उनकी जो सोशल एक्टिविटीज है ना, सोशल वर्क है, और उसको रिकग्नाइज करें और उसको थोड़ा सा उसको कंपेंसेट करें। और मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे काम ये बुजुर्ग कर लेंगे जो एक बंदा शायद बहुत ज्यादा पैसे मांगे, लेकिन ये लोग अपने आप को मसरूफ करने के लिए कम कम इंसेंटिव्स के साथ भी बिजी होना राजी हो जाएंगे अगर इनको रिकग्निशन दी जाए और रिस्पेक्ट दी जाए। नेक्स्ट करें। मैं असल में असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर आना चाह रहा हूँ।
इसको भी आगे ले जाएं, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग को भी नेक्स्ट ले जाएं। केयर गिवर सपोर्ट की ट्रेनिंग की मैंने बात कर ली, आगे चलें। हाँ, ये इसमें 2 तरह की चीजें हैं जो हमें फौरन रिकमेंड करनी चाहिए। हमने एक सर्वे किया, पता होगा आपको, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान में बेसलाइन किया WHO की सपोर्ट के साथ। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ जनरलाइज्ड असेसमेंट ऑफ द नीड फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है ये जो मैंने और सब सोहेल साहब ने और बाकी लोगों ने ग्लासेस पहने हुए हैं, या कुछ लोग हमारे भाई जो हैं, दोस्त हैं, वो हियरिंग एड यूज करते हैं, कुछ डिफरेंट किस्म के स्टिक लेके चलते हैं। तो हमारे जो भी सपोर्ट ऐसी जिससे आपकी फंक्शनैलिटी बेहतर हो जाए, इसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप यकीन माने कि सर्वे के अंदर जब हमने लोगों से पूछा, ये हमारा सेंसस हुआ था, उसमें भी मैंने बात की है सेंसस और पाकिस्तान सेंसस वालों से, जब वो जाके घर में पूछते हैं आपके घर में कोई माजूर तो नहीं है, तो जवाब आता है नहीं, कोई माजूर नहीं है। डिसेबिलिटी में यही मसला आता है। और एक बुजुर्ग बैठा हुआ चरपाई के ऊपर, तो वो कहते नहीं, ये मजूर नहीं हैगा, ਇਹਦੀ कोई उम्र ज्यादा हो गई है, ता ये थोड़ा जा मुश्किल है चलना फिरना ਇਹਦਾ। मतलब उनका ये जवाब होता है। सो इट्स अ वेरी स्टिग्मा, बिग स्टिग्मा कि कोई ये सोचे कि बुजुर्ग मेरा जो है वो लाठी लेके चलता है या क्रचिस लेके चलता है, इसको स्टिग्मा सब फील किया जाता है। हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है और स्टिग्मा का वर्ड और डिसेबिलिटी का वर्ड माइनस करना है। डिसेबिलिटी बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है हमारी एल्डरली में, उसको किसी तरीके से दूर करने का तरीका ये है कि उससे बजाय इसके कि आपके अंदर माजूरी है, उसको ये पूछें कि आप कितने कदम चलते हैं, रोज चल सकते हैं, बाथरूम खुद जा सकते हैं, खाने के बारे में मुख्तलिफ। तो आपने डिसेबिलिटी का वर्ड यूज किए बगैर उनकी फंक्शनैलिटी कैसे बेहतर करनी है, उसके लिए हर किस्म की फंक्शनैलिटी के लिए एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मौजूद है। 25 तो हमने, ये हमारा जो सेहत सहूलत प्रोग्राम था, उनको लिख के दी थी कि ये सेहत सहूलत प्रोग्राम में गरीबों के लिए ये वाली, जिसमें ज़ाहिर है आंखों के लिए, कानों के लिए और मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स हैं जो बड़े सस्ते मिल जाते हैं कई केसेस में, और मोस्ट केसेस में तो एनके भी नहीं होती और वो बिल्कुल ब्लाइंड फील कर रहे होते हैं। सो ये दोनों चीज़ें, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का यूज़ फॉर टेली मेडिसिन और डिफरेंट किस्म की, जिस तरह अभी रिजवान ताज साहब ने भी बनाया हुआ है टेली मेडिसिन का और टेली साइकेट्री का, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रावलपिंडी के अंदर भी है। तो वी कैन यूज टेक्नोलॉजी फॉर पेरिफेरल लेवल, जो बुजुर्ग हैं हमारे पेरिफेरी में, शहर से परे रहते हैं, उनके बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर हम मोबाइल के साथ और किसी के साथ लिंक करके एल्डरली की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करें जी। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, डेफिनेटली ये हम करेंगे जब आपकी वो होगी ना, जिस पे हम बात करेंगे चैरिटी पॉलिसी की। ये सारा कुछ पॉलिसी की फूड है। आगे चलें जी। कल्चरल एंड इंडिविजुअल सेंसिटिविटी, ये सर्विसेज की बात हो रही है। अप्रोप्रिएटनेस विद रेफरेंस टू कल्चरली सेंसिटिव और पर्सन सेंटर्ड केयर है, ये इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए हमने कोई एक नया प्रोग्राम नहीं बनाना, इस चीज की ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट करें। रिसर्च और एडवोकेसी की बहुत ज़रूरत है। जो काम कर रहे हैं हमारे भाई सोहेल साहब, ये आज की मीटिंग भी इसी चीज़ के लिए है। हमें डाटा चाहिए कि किस बुजुर्ग को किस एज के अंदर कितने, हमारे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इलनेसेस उनको हैं, उसकी बेसिस पे फिर हम उनकी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं और सप्लाई का मॉडल बना सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए होंगी। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की भी बात हो रही है। नेक्स्ट चलें जी। अच्छा, आखिर में सफदर साहब, एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमने देखा पाकिस्तान में, वो ये है कि जेंडर का पर्सपेक्टिव भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे इन एल्डरली। वाहिद मैं कहूँगा कि नेगेटिव जो कहते हैं ना डायमेंशन मर्द पाकिस्तान में फील करता है ना, वो बुढ़ापे में करता है। यानी कि It appears we have lost Dr. Shahzad again. नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज? नहीं नहीं आ रही है मुझे, वो दरमियान में ड्रॉप हुआ था। हाँ जी, अब आ अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ जेंडर डायमेंशन बहुत स्ट्रांग है हमारे यहाँ पे एल्डरली में, पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्टली। जो फीमेल है ना, दे आर बेटर केयर्ड फॉर इन देयर एल्डरली एज एज कंपेयर टू मेल्स। और उसमें बहुत बड़ा रोल मेल की अपनी, मैं कहता हूँ ना, गलतियां कह लें या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग कह लें या कोई भी एक रीजन कह लें, कि अगर तो मेल रह गया ना अकेला, तो उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल होती है। Whereas the female as a mother of the household is considered or taken care of very well in the country. और ये हमारे कई इथनोग्राफिक स्टडीज और हेल्थ की जो स्टडीज हमने की, उसमें प्रूव हुआ
कि जेंडर बेस्ड जो अगर देखा जाए ना, तो वाहिद चीज़ जहाँ पे जाके मर्द के खिलाफ चीज़ यूज होना शुरू हो जाती है, मर्द होना या जेंडर डायमेंशन, वो एल्डरली में है। मेल जो है उसका उस तरह से रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं होती, और वो भी डिपेंड करता है खैर उसकी इकोनॉमिक्स और बाकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन ओवरऑल पुअर सोसाइटीज़ में मदर की केयर ज़्यादा है और मेल्स की केयर कम है, और इसलिए हमें थोड़ा सा जेंडर सेंसिटिव भी होना पड़ेगा जब हम अपनी जेरियाट्रिक्स के अंदर और हेल्थ जो अपनी इंटीग्रेट करेंगे हेल्थ सिस्टम में चीज़ों को, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेल इज आल्सो मोर मार्जिनलाइज्ड व्हेन ही इज ओल्डर, और उसके अंदर फिर हमें वो जो जेंडर डायमेंशन जवानी में नजर आती है ना, ज़्यादा डोमिनेंसी ऑफ द मेल, वो ख़त्म हो जाती है जब आप बुजुर्ग उसमें पहुंचते हैं। और इंशाल्लाह ये पॉलिसी और इस तरह की चीज़ें जब डिस्कशन होंगी तो हमें लगेगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डूएबल है। देयर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन डू विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। और आखिरी 2 मिनट में मैं बता दूं कि हमने यहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ केयर की असेसमेंट असाइनमेंट दी इधर पेंशनर्स के हवाले से। तो हम ये सुन के हैरान हुए कि जो पेंशनर आते थे बैंक में, वो उनको बिठाया होता था बैंक से बाहर। नेशनल बैंक में पेंशन मिलती थी उनको, और नेशनल बैंक का जो पैथेटिक हाल है वो सब पाकिस्तान को पता है। जिस तरह पाकिस्तान के बाकी नेशनल इदारों का हाल है, इसी तरह इस बैंक का भी यही हाल है। तो हमने जाना ना, हमारी HSA की, NIH की और तमाम से यहाँ के इदारों की, NARC, PARC और EPI की सैलरीज होती थी नेशनल बैंक में। हम वहाँ जाते थे तो बाहर एंट्रेंस के बाहर धूप में जमीन पे बुजुर्ग बैठे होते थे, बाबे बहुत सारे, और सर्कल बना के और आपस में गपशप मारे होते थे। और अंदर से उन्हें कहा जाता था 11 बजे से पहले आपने बैंक के अंदर नहीं घुसना। मैं ख्याल है 3 या 4 तारीख को ना पेंशन डे होता था बैंक में। पेंशनर का एक स्पेसिफिक डे था कि उसने किस दिन आगे पेंशन लेनी है नेशनल बैंक में। 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हमारे एक स्टूडेंट ने उनसे रिसर्च की और उन बड़े तरस आया उनके ऊपर कि यार आप मतलब ये इनके साथ इतना जुल्म होता है, तो मैं जरा क्वालिटी ऑफ केयर के हवाले से इनसे कोई करता हूँ इंटरव्यू। आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो जो बुजुर्ग थे उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि नेशनल बैंक की सर्विसेज बुरी हैं। हम हैरान हो गए। उनमें से किसी ने पूछा, सर ये आपको इस तरह बाहर उन्होंने जमीन पे बिठाया होता है, तो आपके लिए बेंच होने चाहिए, कुर्सियां होनी चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस हम बुढ़े हो गए, असि जमीन तले ही जाना है, तो जमीन पे बैठे हैं तो फिर की हो गया। अच्छा वो बदतमीजी करते हैं आपके साथ, तो आपको बुरा नहीं? नहीं बदतमीजी कीजिए, उन्होंने लोग उन्होंने तंग बड़ा कर देने, इस वास्ते बदतमीजी कर देने। अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक बुजुर्ग ये कह दे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और नजर आ रही थी ज्यादती होते हुए। अच्छा आप जो है जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आना ना पड़े और आपके घरों में पेंशन पहुंच जाए, ऐसा कुछ सिस्टम हम रिकमेंड करें? ओ नहीं नहीं नहीं, तोबा तोबा, इस तरह ना करना, हम तो 3 तारीख का पूरा महीना इंतजार करते हैं। हमने कहा वो क्यों? कि जी 3 तारीख ਨੂੰ आवांगे तो इतने बह के जरा अपने दोस्तों ਨਾਲ मिलांगे, तो वरना तो हमें घर से निकलने कौन देता ना, हम निकल सकते हैं। हमें पेंशन लेने के बहाने ये लेके आते हैं बैंक में और हमारे साथ सारा दिन गुजारते हैं, बच्चे भी, बेटा भी, और यहाँ दोस्त मिलते हैं हमें बहुत सारे पुराने, और पूरा हाल हवाल हो जाता है। तो आप ये सोचें कि ये कितना बड़ा सोशल कल्चरल डायनामिक है जो टोटली हम डिफरेंट परसीव कर रहे थे। देखने में हमें लग रहा था कि इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि नहीं, ये जो चीज है ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि लोनलीनेस और सोशलाइजेशन और कल्चरल एस्पेक्ट्स अगर हम उनको किसी तरह यूटिलाइज कर लें ना अपने सिस्टम में, तो इट विल बी मच बेटर। थैंक यू वेरी मच साहब, एंड आई एम हियर फॉर एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। जी डॉक्टर साहब, thank you very much. Eventually, your presentation was kind of good to conclude the whole discussion and bringing all the different aspects which are required to be put into a holistic framework. Now, this is for us all to help improve the Senior Citizen Act, and that's an act. We separately need a policy framework, the way we have worked in case of person with disability, and propose a model of care, in terms of model exemplary care also in case of at least Islamabad Capital Territory. And there I would expect and request all the participants to join hands with us to we can tell what we have done in terms of person with disabilities, because we plan to do the same in case of elderly. And as Dr. Shahzad has identified 5 major challenges, that is seclusion, marginalization, discrimination, deprivation, exclusion. All these are important aspects, but manageable, and manageable also by the adopting holistic approaches, and also being sensitive to the cultural aspect also. The last step, the anecdote that Dr. has narrated,
This is a very wise counsel, Dr. Shahzad. Thank you very much. That there is no need to use the word disability actually. Yes. Functionality is good enough कि आप लोगों की तवज्जो इस तरफ करवाएं. Law हर चीज का solution नहीं है. Though in some cases, for example, in India, in Maharashtra, the police is entrusted with the responsibility to visit every house every month where elderly people live, to go and check on them कि क्या हाल वाल है, कैसा चल रहा है, किस तरह से चीजें हैं. तो there could be serious issues of abuse also. But I think today the general sense which is appearing is that preventive approaches are extremely important. And when we are talking about the challenges to the elderly, we are also actually talking about the challenges of young people which they are going to face in the near future. So thank you very much, Dr. Shahzad, again for winding up the whole discussion. We have many more questions in the chat box, but this is a good time that we have spent on expanding the issues, coming up with the recommendations, and this is a continuous process. We continue with that, and once we have the document ready, we would present the document, the main features, again in another discussion, inshallah, next month. So this is my pleasure and honor to thank all the speakers and the participants to be present with us, and we hope to grow as a community to help our elders and help the systems perform better. Thank you very much. Thank you all.